आवाज चेक कर लो, साउंड क्लियर है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गेट वाला। सब लोग कैसे हो? आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? आज हम मेजरमेंट्स का पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे। यस, जल्दी से जल्दी आप सब लोग लॉग इन कर दो एंड जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक कर लो। तो ऑलरेडी मेजरमेंट्स के बारे में आपको पूरा प्रिपरेशन दो तरीके से हो चुका है। ऑलरेडी एक वन शॉट सीरीज में मैंने डिस्कस किया हूं एंड एक यूट्यूब लाइव क्लास भी लिया हूं। सर नट चल। सो मेजरमेंट्स का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? ये सेशन डबल ई इंस्ट्रूमेंटेशन लोगों के लिए है और इलेक्ट्रिकल पीपल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन पीपल के लिए। ओके, सो मेजरमेंट्स में हमको कितना टॉपिक्स है एक बार स्केच करेंगे, उसके बाद डायरेक्टली पीवाईक्यू सीरीज को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक करो बेटा। ओके, तो जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक करो। ओके चलो। सो फर्स्ट टॉपिक है एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है डबल ई बच्चों के लिए एंड इंस्ट्रूमेंटेशन बच्चों के लिए। ओके, सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर कैलकुलेटर्स, पेपर पेन एवरीथिंग प्लीज कीप इन लाइन। ओके, तो मैं भी सर्च कर रहा हूं, मैं भी पेपर पेन के लिए, कैलसी के लिए। तो दोस्तों जरूर आपने कैलसी यूज करो क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं आज। सो मैं एक बार बिफोर स्टार्टिंग द सेशन तो मैं एक बार लिखना चाहता हूँ, पूरा सिलेबस का ओवरव्यू लिखना चाहता हूँ इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स में। ओके, तो ध्यान से देखो। तो मेजरमेंट्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फर्स्ट कम्स द एरर एनालिसिस। बेटा एरर एनालिसिस बहुत सारा क्वेश्चन आने वाला है, एवरी ईयर हमको एक एक क्वेश्चन आ रहा है एरर एनालिसिस पर। उसके बाद मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, के बाद मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में आपको सब इंस्ट्रूमेंट्स आने वाला है, पीएमएमसी, मूविंग आयरन, डायनामोमीटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स है। इसके बाद मेजरमेंट ऑफ पावर मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट उसके बाद एनर्जी मेजरमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट उसके बाद ब्रिड्जेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको ब्रिड्जेस में क्या क्या है, डीसी ब्रिड्जेस है, एसी ब्रिड्जेस भी है। एंड नेक्स्ट कम्स द सीआरओ एंड ऑल दोस इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स। दीज आर द मेजर टॉपिक्स मेरे दोस्तों। ओके, एक बार सेशन को, जितने लोग सेशन को देख रहे, मुझे एक बार कंफर्मेशन कर दिए बेटा आपका प्रिपरेशन कैसा हो अब तक। मेजरमेंट्स में आपका सिचुएशन क्या है, आपका स्टेटस क्या है, कैसा लग रहा है आपका प्रिपरेशन, हाउ फॉर योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन। क्योंकि अभी एक महीने है इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए, इंस्ट्रूमेंट स्टूडेंट्स के लिए। लास्ट ईयर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए एक बिट आया, लेकिन इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 8 क्वेश्चंस आया, 8 क्वेश्चंस आ चुका है। सो हाउ फॉर योर प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन। ओके, एक बार मुझे तैयार है सब लोग, प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है, क्वेश्चंस के लिए तैयार है? यस, गुड गुड गुड। चलो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट एरर एनालिसिस में फर्स्ट टॉपिक हम एरर एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं। सो एरर एनालिसिस में फर्स्ट क्वेश्चन, ट्राई टू आंसर दिस। ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप लिया है क्वेश्चन मैंने।
प्लीज गो थ्रू द क्वेश्चन माय डियर, प्लीज गो थ्रू द क्वेश्चन क्लियरली। ये क्वेश्चन आईआईटी रूरकी 2017 में आ चुका है। हम फर्स्ट वी आर गोइंग विथ लास्ट। अच्छा चल रहा है अंजलि कुमारी, वेरी गुड, नाइस। ज्यादा अच्छा नहीं है, कैसे और इम्प्रूव सर से क्या बोल रहा हूं मैंने। आप इफ यू वांट टू इम्प्रूव in this first 1 month, in this last 1 month, if you want to improve, first focus on the most frequently asked topics. Most frequently asked topics are error analysis, my dear. Okay, measurement questions able to do, sir, very good, very good, very good, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है ये। एंड जितने लोग सेशन को देख रहे, सेशन अंत तक रहो। ऑलमोस्ट 2.5 आवर सेशन में लेने वाला हूं। ये 2.5 आवर सेशन में लगभग हमने 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस के साथ साथ हमने कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस करेंगे। ओके माय डियर, चलो ये क्वेश्चन क्या है। द फॉलोइंग मेजरमेंट्स आर ऑब्टेन्ड ऑन अ सिंगल फेज लोड। वी दिया है, सो वी इज गिवन एज हाउ मच, वी इज गिवन एज 220 वोल्ट्स प्लस और माइनस 1% माय डियर। एंड करंट दिया है, current is given as 5 amperes plus or minus 1% given, and power is also given my dear। power कितना दिया है 555 watts plus or minus 2%, and if the power factor is calculated using these measurements, the worst case error in the calculated power factor in percent is asking। ये क्वेश्चन मजा आ जाएगा सर। यस यस yes, very good, very good, don't worry, definitely I am going to give good guidance for the subjects of measurements and also instrumentation। almost the measurements लगभग this is the third time I am taking in YouTube। इसके बाद मैं इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी मैं सेशन प्लान कर रहा हूँ। जितने लोग इंस्ट्रूमेंटेशन बच्चे हैं उसके लिए भी मैं प्लान कर रहा हूँ। इंस्ट्रूमेंटेशन का कोर सब्जेक्ट्स है कंप्यूटर ऑर्गेनाइज, कोर सब्जेक्ट्स लाइक सेंसर्स एंड ट्रांसड्यूसर्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, इसके ऊपर भी मैं एक सेशन लेने वाला हूँ। श्योर इन द मंथ ऑफ जनवरी आई एम गोइंग टू सैटिस्फाई द विशेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंटेशन एस्पिरेंट्स। ओके चलो, यस यस, इंस्ट्रूमेंटेशन स्टूडेंट्स के लिए भी मैं सेशन प्लान करता हूँ। मैंने प्रॉमिस किया हूँ क्योंकि बहुत सारा टाइट चल रहा है अभी हमारा पूरा लाइव सेशंस एंड रिकॉर्डिंग सेशंस एंड मोटिवेशनल सेशंस बहुत सारा टाइट है। लेकिन इवन दो हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन एस्पिरेंट्स आर 4400 स्ट्रेंथ, उन लोगों के लिए भी मैं सेशन प्लान करके आने वाला हूँ। चलो, सो आपको पता है वेरी सिंपल क्वेश्चन माय डियर, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस। सो W इज द पावर, दैट इज नथिंग बट VI cos phi, am I right or not? ओके, सो एवरेज पावर का फॉर्मूला है VI cos phi। सो यहां से आप निकाल सकते हैं W by VI is equal to cos phi। So this is the power factor। Now if you see, it is the division of quantities, combination of division of quantities। a division of quantities में percentage error of the power factor will be what now? Percentage error of the power plus percentage error of the voltage and percentage error of the current। बेटा सिंपल की बात है। जितने साल में ये क्वेश्चन आ चुका है, ऐसा मॉडल क्वेश्चन ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स रिपीट हो चुका है कॉन्सेप्चुअली। तो आप ध्यान से उसको आंसर कर सकते हैं। कितना होगा आंसर? परसेंटेज पावर में कितना है 2% प्लस 1% एंड 1%। सो राइट आंसर होगा 4% इज अ राइट आंसर माय डियर। फटाफट मुझे लाइक कर दो सेशन को, एक बार मुझे थम्स अप दिखाओ बेटा, सेशन का थम्स अप सिंबल दिखाइए। जितने लोग सेशन है, फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव स्टार्टेड विथ 4%। ओके, मैं इधर एक और एक इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहता हूं। लिसन डियर स्टूडेंट्स, सपोज सी हियर पावर इज इक्वल टू VI cos phi। सपोज इसका वैल्यू पूछा आपको, एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना, तो cos phi इज इक्वल टू P by V इंटू I माई डियर। सो पावर का वैल्यू दिया है, सपोज आपको क्वेश्चन पूछा, पावर फैक्टर का वैल्यू पूछा, सपोज दैट विल बी हाउ मच 555 555। सो दिस विल बी 555 डिवाइड बाय V कितना दिया है, वोल्टेज दिया है आपको 220 एंड करंट दिया है 5। सो दिस इज 220 इंटू 5। तो ऐसा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्लीज यूज अ कैलसी, 555 डिवाइड बाय
Of course question में not given, but I am doing another question here, so it is coming as 0.5045. This is the power factor. लेकिन पावर फैक्टर का एरर है, तो पावर फैक्टर कैसा रिप्रेजेंट करना, 0.5045 plus or minus, what is the error my dear, what is the error, the error is coming as 4% my dear, so the error is coming as how much, 4%. ओके सो ये ध्यान से देखो, वेरी गुड अंजलि कुमारी, सुपर सुपर सुपर, ऐसा भी क्वेश्चंस आ सकता है, रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सिल्ली मिस्टेक्स करते हैं एग्जाम में, बहुत सारा सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, आजकल गेट में कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं आ रहे, आजकल गेट में ऐसा क्वेश्चंस आ रहे हैं आप 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना है उसका, वो 1 मिनट के अंदर जो कुछ सॉल्व कर सकते हैं वही क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन हम लोग सिल्ली मिस्टेक्स करते हैं, समटाइम्स आपको ऐसा देता है, समटाइम्स उसका एब्सोल्यूट वैल्यू भी देते हैं, 4% ऑफ 0.505, ऐसा भी देख सकते अंजलि, 4% ऑफ 0.505, सो इफ यू सी दैट एब्सोल्यूट एरर की फॉर्मेट भी दे सकते हैं, ओके ये परसेंटेज एरर है, ओके चलो कितना आ रहा है, 0.5045 प्लस और माइनस 4%, 4/100 ऑफ 0.5045, सो ऐसा डिफरेंट वेज में हम एरर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा, तो कितना आ रहा है आपको 0.02 आ रहा है, दैट मीन्स 0.5045 प्लस और माइनस 0.0201, so if you add 0.5045, so it is coming as 0.524, 0.5246, or if you take it off 0.5045 minus 0.0201, it is coming as 0.4844. So these are the different ways of giving the answer my dear, okay, of course एक क्वेश्चन से मैंने डिस्कस कर रहा हूं, so these are the different ways, these are the different ways my dear, try to understand my along with the answer आप लोगों के लिए मैंने क्या दे रहा हूं, different ways of getting the answer, ये सही है, ओके ना, ये भी सही है, so this is also correct, okay, and this is also correct, so this is percentage error my dear, this is absolute error my dear, and this is the range my dear, min to max, different formats में आपको ऐसा देगा, तो प्लीज लाइक करो सेशन को, जितने लोग सेशन को देख रहे हैं मुझे, सेशन को लाइक करो, सेशन को शेयर करो, सेशन को अच्छा कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स दीजिए, क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम्स करने हैं एंड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस करना चाहता हूं मैंने, पीवाईक्यू में कॉन्सेप्ट्स भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में आ चुका है देन डेफिनेटली आप रिमेंबर कर सकते हैं, ऑलवेज रिमेंबर माय डियर, सपोज y is equal to a divided by b, then the percentage error in y is equal to percentage error of a plus percentage error of b my dear. Similarly y is equal to a into b, then also my dear percentage error in y will be percentage error of a plus b my dear, okay, so ऐसा लास्ट में सर कैसे किया सर, this one my dear just I have added 0.505 minus 0.0201, 0.505 plus 0.0201, this is the minimum value, this is the minimum value, this is the maximum value, got it, very good very good, चलो shall I go for the next question, एक बार मुझे thumbs up दिखाए बेटा, shall we go for the next question फटाफट, चलो चलो चलो, now we'll move for the next question, second question, yeah, this is very important question, this question came from IIT Roorkee 2017, question number 2 MCQ multiple choice questions, so try to answer this question. आ गया ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आएगा, डोंट वरी,
Yes. Two resistors with nominal resistances values R1 and R2 have additive uncertainties. Additive uncertainty delta R1 and delta R2 respectively. When these resistors are connected in parallel, the standard deviation of the error in the equivalent resistance R is dash. Excellent question hai. See my dear, suppose two resistors are in parallel. Okay, so there is one resistance R1 and the uncertainty in R1. Okay, suppose I will tell you one way of answering this. Okay, suppose Z is dependent on X and Y. Z is dependent on X comma Y. That means Z is a function of X comma Y. Okay, there are एक uncertainty का एक methodology है mathematics में. Uncertainty is a way of expressing the error मेरे दोस्तों. Okay, so the uncertainty in X is represented as Wx. Uncertainty in Y is taken as Wy. Okay my dear, then what is the uncertainty in Z? तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है? तो उसके लिए हम क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो कुछ एक्सप्रेशन है Z, so first make partial differentiation with respect to X and take the uncertainty of X. Okay ना my dear? dou Z by dou X whole square plus dou Z by dou Y and uncertainty in Y whole square. So this square root, so ये होगा हमारा uncertainty in Z my dear. Please make a note of this particular formula. ये बहुत अच्छा important formula है. ये बहुत अच्छा important formula है. Actually हमको error represent करने के लिए different statistical analysis है. एरर कैसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम? स्टैंडर्ड डिविएशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेरिएंस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रेंज एरर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मीन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके ना, एवरेज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो एज द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज इवॉल्व्ड, द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे ऑफ एनालिसिस इज द अनसर्टेनिटी. सो नाउ इन दिस क्वेश्चन क्या दिया है आपको? इन दिस क्वेश्चन R is having combination of R1 and R2. Okay, two resistors with nominal resistance R1 and R2, additive uncertainties are del R1 del R2 respectively when it's connected in parallel. So when they're connected in parallel क्या होगा? When two resistors are connected in parallel, 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 होगा. Okay, now uncertainty in R को कैसा करना है? Uncertainty in R को कैसा करना है? First दो R partial differentiation with respect to R1 and uncertainty in R1, that is uncertainty in R1 WR1 whole square plus next dou R by dou R2. Okay my dear, dou R by dou R2, uncertainty in R2 whole square and इसको square root, important है square root भी attach कर. Okay my dear, हमारा क्वेश्चन में अनसर्टेनिटी इन R1 इज गिवन एज व्हाट? डेल R1. सो उसको डेल R1 से रिप्रेजेंट करो तो क्या होगा इसका आंसर? तो इधर दो R बाई दो R1, so this will become delta R1 whole square plus दो R by दो R2. This is delta R2 whole square. So what is the right answer my dear? दो R by दो R1 delta R1 whole square by दो R by दो R2 delta R2 whole square. This is दो R by दो R2 del R1 is opposite. This is wrong. Okay, ये भी wrong है, ये भी wrong है. So the right answer is. मजा आ गया मेरे दोस्तों? मजा आ गया हितेश? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. सब लोग बहुत अच्छा आंसर दे रहे. मैं अभी आपको एक क्वेश्चन देता हूं.
एक क्वेश्चन देता हूं, उसको भी कर ले। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेकिंग लाइक दिस, power is equal to V into I. Okay, so now uncertainty, so उसका uncertainty कैसा निकालना है? So this is WP, तो उसका uncertainty बताइए कैसा करना है। So let us take uncertainty in voltage, voltage में uncertainty कितना है? WV, and current में uncertainty कितना है? WI. ओके, तो अभी क्या करना है उसको? दो P बाय दो V अनसर्टेनिटी इन V होल स्क्वायर प्लस दो P बाय दो I अनसर्टेनिटी इन I. अंडरस्टूड माय डियर? सो दीज आर द डिफरेंट वेज ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन में ऐसा भी देते हैं, तो दो P बाई दो V क्या होगा? फ्रॉम दिस दो P बाई दो V क्या होगा? I होगा। गॉट इट और नॉट? एंड दो P बाई दो I क्या होगा? V होगा। सो यहां से आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन फॉर्मेशन होने की चांसेस भी है। सो दो P बाई दो V क्या हो गया? दो P बाई दो V हो गया I, अनसर्टेनिटी इन V WV होल स्क्वायर प्लस दो P बाई दो I क्या हो गया? V, अनसर्टेनिटी इन इस WI हो गया। सो आपको एक क्वेश्चन देते हैं, वोल्टेज का वैल्यू सम 230 वोल्ट्स है एंड अनसर्टेनिटी इज 2% और अनसर्टेनिटी इज सम 0.02 है and current is equal to 5 amperes and uncertainty is 0.01 है। then what is the, समझ में आपको क्वेश्चन ऐसा फ्रेम करता है आपको बच्चों, क्वेश्चन ऐसा देते हैं डाटा। सपोज क्वेश्चन ऐसा दे सकते हैं, क्वेश्चन V is equal to 230 volts, current is equal to 5 amperes. Okay my dear, suppose the DC power, the uncertainty in V is equal to suppose 2 volts, uncertainty in current is 1 ampere, let us take this as 10 volts. Calculate uncertainty in power. Can you answer my dear? उसका आंसर दीजिए जल्दी। बताता हूं मैं। This is absolute value my dear, this is absolute value। क्या अभी बताइए अनसर्टेनिटी कितना होगा? अनसर्टेनिटी आंसर बताइए जल्दी। तो आंसर कितना होगा? अनसर्टेनिटी का आंसर स्क्वायर रूट ऑफ I is equal to 5 amperes, अनसर्टेनिटी इन वोल्टेज 10 होल स्क्वायर प्लस V कितना है? 230 एंड अनसर्टेनिटी इन करंट 1 होल स्क्वायर। कितना आ रहा है एक बार चेक करो। is coming as 235.372 आ रहा है। Am I right? 235.372, वेरी गुड। सो अभी पावर कितना होगा? सो पावर इज इक्वल टू डीसी पावर, सपोज इफ आई एम टेकिंग द डीसी पावर, दैट कितना होगा? 230 इंटू 5 1150 प्लस और माइनस 235.732 होगा।
गॉट इट माय डियर? आई एम सद्दाम। क्लियर है सब लोगों को? सबको क्लियर है? चलो चलो माय डियर, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। सब लोग तैयार हैं? यस, वेरी गुड। 235.73। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन नाउ। ये क्वेश्चन देखो एक बार, दिस क्वेश्चन में मिस्टेक है। दिस इज 1 माइक। चलो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन माय डियर। मजा आ गया सद्दाम? हाँ चलो आंसर कर लो, क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। A capacitive voltage divider is used to measure the bus voltage V bus. This is a V bus in a high voltage 50 Hz AC system as shown in the figure. एक capacitive network है बेटा, a very fundamental thing है। networks में आ चुका आपको। networks में capacitive divider circuit voltage division rule आप use कर सकते हैं। Okay, so C1 and C2 both are in series my dear. So C1 and C2 are in series. And the values of their tolerances is given. C1 is having 1 microfarad plus or minus 10% on their nominal capacitance value. So 10% बोलो तो कितना होगा? 1 microfarad plus or minus 10 by 100. 10 by, this is 10 by 100 of 1 microfarad. So that means 0.1 microfarad होगा. So this will become 1 plus or minus 0.1 my dear. Okay, 1 plus or minus 0.1. Similarly C2 कितना होगा? C2 कितना दिया है? C2 9 microfarads plus or minus 10%. 9 microfarads plus or minus 10%. That means कितना होगा? 10 by 100, 0.1 into 9, 0.9. So that means 9 plus or minus 0.9 microfarads होगा। Am I right? या क्वेश्चन पूछ रहा है इफ द बस वोल्टेज इज 100 किलोवोल्ट्स आरएमएस द मैक्सिमम आरएमएस आउटपुट वोल्टेज पूछ रहा है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड। क्वेश्चन को कैसे कैलकुलेट करना? टू कैपेसिटर्स आर इन सीरीज माय डियर। आपको पता है बेसिक थ्योरी ऑफ कैपेसिटर्स। सो दिस इज द C2, दिस इज द C1, सो दिस द V इनपुट। तो ये है हमारा आउटपुट अक्रॉस द सेकंड। हमने लेना है आउटपुट अक्रॉस द सेकंड, वी आउट। ओके, सो वी आउट कैसे ले सकते हैं आप? आपको पता है आपको टू कैपेसिटर्स आर सीरीज। ये तो बहुत ही क्लियर है ना आपको। वोल्टेज डिवीजन रूल फॉर द कैपेसिटर्स। वी आउट कैसा लेना है? तो वी आउट इज इक्वल टू ऑपोजिट कैपेसिटेंस बाय टोटल कैपेसिटेंस इनटू सप्लाई वोल्टेज। हमको क्या दिया है क्वेश्चन में? हमको V आउट कितना होना है? ये मैक्सिमम आरएमएस आना है। क्वेश्चन में क्या दिया है? मैक्सिमम आउटपुट आना है। तो टू गेट V आउट एज मैक्सिमम, टू गेट V आउट एज मैक्सिमम, व्हाट इज द कंडीशन नंबर 1 एंड व्हाट इज द कंडीशन नंबर 2? अगर आपको ये रेशियो पूरा निकाल के V आउट मैक्स माना बोलो तो डिनोमिनेटर कितना होना है? डिनोमिनेटर कम होना है, C1 का वैल्यू ज्यादा होना है। सो कंडीशन नंबर 1, C1 वी हैव टू चूज मिनिमम, सॉरी C1 वी हैव टू चूज एज मैक्सिमम एंड C1 प्लस C2 जो कुछ सम है ना, so that we have to choose minimum. Okay, so what is the maximum C1? हमको क्या दिया है? 1 प्लस और माइनस 0.1 बोलो तो C1 क्या है? C1 का वैल्यू क्या है? 1 माइक्रोफैरड प्लस और माइनस 0.1 बोलो तो दैट इज 0.9 माइक्रोफैरड्स टू 1.1 माइक्रोफैरड। तो ये होगा मिनिमम,
ए होगा। ऑल ऑफ आर गेटिंग माय डियर? ऐसा क्वेश्चंस कहाँ आएगा आपको? ऐसा क्वेश्चंस वोल्टेज डिवाइडेड नेटवर्क्स, स्पेशली सीआरओ में, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में, लैब में प्रैक्टिकली अगर आपने सीआरओ का प्रोब्स जो कुछ है, सीआरओ का प्रोब्स यूज करके आपने एक कंपोनेंट को कनेक्ट करते ना, एक डायोड सर्क्यूट है और एक बीजेटी सर्क्यूट है, एक ट्रांजिस्टर सर्क्यूट है, वो सर्क्यूट का आउटपुट जो कुछ देखना चाहते हो आपको, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्क्यूट, क्या करते हैं आप? सीआरओ का प्रोब्स जो कुछ है उसको कनेक्ट करते हैं। वो कनेक्ट करने के प्रोसेस में क्या होगा, सीआरओ का प्रोब्स आर मेड बाय द केबल, राइट? वो केबल को केबल कैपेसिटेंस होगा। सो डेफिनेटली क्या होगा, ये कैपेसिटेंस विल बी एडेड टू द सर्क्यूट इंपीडेंस, ओवरऑल नेटवर्क विल बिकम लाइक ए कैपेसिटिव नेटवर्क। अगर ये कैपेसिटिव नेटवर्क से आपको आउटपुट अच्छा आना है, दैट मीन्स द वैल्यू दैट यू आर सीइंग ऑन द सीआरओ शुड बी प्रॉपर। फॉर दैट देयर इज सर्टेन कंडीशन। वो कंडीशन क्या है? ये रेशियो। ये अकॉर्डिंग टू दिस रेशियो, if you want to get a low error or if you want to get a better output on the CRO, there are certain conditions of the cable capacitance. According to that cable capacitance value, we will design the cable, we will design the CRO probe. That is a concept behind this, my dear. CRO का probe का dimensions कितना होना है, उसका diameter कितना होना है, उसका cylindrical radius कितना होना है, according to that its capacitance value is going to affect not only its CRO, the circuit capacitance. That's the reason ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। ओके, सिमिलरली C2 का वैल्यू क्या है? C2 का वैल्यू कितना दिया है? 9 माइक्रोफैरेड्स प्लस और माइनस 10%। सो ये 9 माइक्रोफैरेड्स प्लस और माइनस 10%, 10/100 दैट इज 0.1 into 9, 0.9। सो ये कितना होगा मिनिमम? 9 minus 0.9 दैट मीन्स 8.1 माइक्रोफैरेड मिनिमम होगा एंड 9.9 माइक्रोफैरेड्स मैक्सिमम होगा। ये PYQ है बेटा, PYQ क्वेश्चन है ये। तो प्लीज ऑल ऑफ यू ध्यान से प्रैक्टिस करो। मेजरमेंट्स का क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आता, मेजरमेंट्स का क्वेश्चन इन एडिशन ऑफ नेटवर्क थ्योरी कॉन्सेप्ट, मेजरमेंट का क्वेश्चन एडिशन ऑफ ब्रिज कॉन्सेप्ट, ऐसा आता है। ओके चलो बेटा, अभी मुझे वी आउट मैक्सिमम निकालना है। तो मैक्सिमम के लिए न्यूमरेटर C1 मैक्सिमम होना है। C1 मैक्सिमम कितना है? 1.1 माइक्रोफैरेड। सो मैंने 1.1 माइक्रोफैरेड लिया। नेक्स्ट नीचे कितना है? C1 प्लस C2 दोनों मिला के मिनिमम होना है। सो 0.9 माइक्रोफैरेड्स ले रहा हूँ। ये 0.9 प्लस एंड ये 8.1 होगा एंड इसको मल्टीप्लाई करो। किससे मल्टीप्लाई करना है? सप्लाई वोल्टेज से मल्टीप्लाई करो। सप्लाई वोल्टेज इज 100 किलोवोल्ट्स RMS। सो प्लीज ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। कितना आ रहा है? तो दिस इज 1.1। कैलसी यूज करो। कितना आ रहा है जल्दी बताइए? 0.9 प्लस 8.1, 1.1 डिवाइड बाई आंसर इंटू 100 मुझे आ रहा है ऑलमोस्ट 12.22। एग्जैक्टली कितना आ रहा है? 12.22 किलोवोल्ट्स आ रहा है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, इट इज अ NET क्वेश्चन माय डियर, न्यूमेरिकली आंसर्ड। इट्स अ न्यूमेरिकली आंसर टाइप क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस को आप एग्जैक्ट आंसर देना है। 12.22 किलोवोल्ट्स आ रहा है। मजा आ गया बेटा? वेरी गुड सदम। जितने लोग सेशन को देख रहे हैं, नॉट ओनली द क्वेश्चन एंड आंसर बेटा, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? क्योंकि PYQ सीरीज बोलो तो हम बहुत सारा PYQ डिस्कस करते हैं। 3 घंटे में हमने 30 क्वेश्चंस वी कैन डिस्कस, 300 क्वेश्चंस आल्सो वी डिस्कस, दैट इज नॉट द मैटर। बट आपको कॉन्सेप्ट मिला, वो कॉन्सेप्ट आप टुमारो ही कैन फ्रेम ए इंडक्टिव सर्क्यूट, टुमारो ही कैन फ्रेम ए रेसिस्टिव सर्क्यूट, और टुमारो ही कैन फ्रेम ए कॉम्बिनेशन ऑफ Z1 Z2 सर्क्यूट। आपको ये पूरा माइंड में फिक्स होना है। मजा आ गया बेटा? सर C2 का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चेक इट वंस। कितना आ गया? 9 minus 0.9। सही है ना? 10% ऑफ 9 करेक्ट है ना? क्या मिस्टेक किया? 9 minus 0.9 8.1 होगा। 9 plus 0.9 9.9 माइक्रोफैरेड्स होगा मिनिमम मैक्सिमम। अच्छा, C1 का मिनिमम 0.9 माइक्रोफैरेड्स, C2 का मिनिमम 8.1 माइक्रोफैरेड। सही है ना? सर C2 का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चेक इट वंस। करेक्ट है ना? मैं सर C2 में मैक्स 9.1 होगा। कैसे 9.1 होगा? मिस्टेक किया आपने। ये 0.1 नहीं होगा, ये 0.9 होगा मिस्टर सद्दाम जी। ये 0.9 होगा, 0.1 नहीं होगा। चेक कर लो एक बार, चेक कर लो सद्दाम जी। ये 10% ऑफ 9 0.1 नहीं होगा, 0.9 होगा ना।
0.1 into 9। चलो माय डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो, एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, आईआईटी खड़गपुर 2014 का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल का है, हमने इलेक्ट्रिकल पीवीक्यू दिख रहे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पीवीक्यूज, फटाफट आंसर कर दीजिए बेटा। सपोज द रेसिस्टर्स R1 and R2 connected in parallel to give an equivalent resistor R. If the resistor R1 and R2 have tolerances of 1% each, the equivalent resistor R for the resistors R1 is 300 ohms and R2 this is। जल्दी आंसर कर दो बेटा, R1 का वैल्यू दिया है 300 ohms एंड R2 का वैल्यू, ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसा करना है? ओके, हाँ सिल्ली मिस्टेक्स मत करना बेटा, ये सिल्ली मिस्टेक्स की वजह से आपको मार्क्स चले जाते हैं। प्लीज टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स, फटाफट आंसर कर दीजिए। R1 R2 के लिए कैसा करना है लेकर, हेलो या क्वेश्चन ऐसा पैरेलल क्वेश्चन आए तो कैसा करना है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या दिया है, टॉलरेंसेस दिया है 1%। सो R1 का टॉलरेंस कितना है, R1 इज इक्वल टू 300 ohms प्लस और माइनस 300 ohms प्लस और माइनस 1%। तो 1% ऑफ 300 बोलो तो कितना होगा, 300 प्लस और माइनस 1/100 of 300, that will become plus or minus 3। ये 300 plus or minus 3 होगा, that means the minimum is right, yeah, minimum is 297, maximum कितना है 303 होगा। this is the best way to avoid the ambiguity, this is the best way my dear, always you follow this range bound methodology। next, हाँ R2 कितना दिया है, R2 कितना दिया है, R2 दिया है 200 ohms प्लस और माइनस 1%। तो कितना होगा 200 प्लस और माइनस 1% ऑफ 200, that is 202, 200 plus or minus 2, that means R2 कितना होगा my dear, 198 to 202 होगा। ओके, तो क्वेश्चन को कैसा कैलकुलेट करना, तो क्वेश्चन पूछ रहा है इक्विवेलेंट रेसिस्टर्स, तो व्हाट इज R इक्विवेलेंट my dear, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 by R1 प्लस R2 होगा। ओके, तो अभी क्वेश्चन ध्यान से देखो, सपोज ही इज आस्किंग if the resistors R1 and R2 have tolerance of 1% each, the equivalent resistor R for the resistors R1 300 ohms and 200 will have a tolerance of dash। Suppose if I am taking the R equivalent minimum if I am taking R1 कितना है, R1 कितना लेना है, that is 297 into 198, so this is 297 into 1898 divided by 297 plus 198, ये कितना आएगा R इक्विवेलेंट मिनिमम, कर रहे हैं आप सब लोग, कितना आ रहा है, 297 into 198 डिवाइड बाय 297 प्लस 198, इसका आंसर आएगा आपको 118.8 आएगा। This is the R equivalent। Okay, similarly calculate for the R maximum, maximum कितना आएगा 297 198,
303 T02 303 into 202 divided by 303 plus 202 हो गया। ये R इक्वलेंट मैक्सिमम कितना आ रहा है 303 into 202 divided by 303 plus 202 कंफ्यूज मत करना कितना आ रहा है 121.2 आ रहा है। दैट मीन्स द रेंज इज कमिंग एक्चुअली कितना है जनरली ट्रू वैल्यू कितना है ट्रू वैल्यू दैट इज ट्रू वैल्यू इज 300 into 200 by 300 plus 200 ये perfect way of doing the question. So these are 300 into 200 divided by 500 कितना आ रहा है 120. So this is the true value. Okay, so if you choose this is true value and this is the true value. Okay my dear, so अभी this is the true value, this is a true value 120. लेकिन अगर आपने परसेंटेज को निकालने के लिए आपने क्या लेना है measurement value minus true value by true value into 100. This is the best way to avoid the confusion. 118.8 minus 120 by 120 to 100 कितना आएगा एक बार कैलकुलेट करो 118.8 minus 120 divided by 120 to 100 exactly is coming as 1% was negative. Next here percentage calculate करो measurement value minus true value by true value into 100. So this is measurement value 121.2 है true value 120 है true value 120 है 200 कितना आएगा कैलकुलेट करो 121.2 minus 120 divided by 120 200. मजा आ गया बेटा 1%. No doubt at all, the right answer goes to option 1% in percentage. अंजलि नितेश ऐसा भी कर सकते या मजा आ गया. इज द बेस्ट वे टू अवॉइड द कंफ्यूजन. जितने लोग अगर पैरेलल रेसिस्टेंस के लिए आप कंफ्यूजन में हो थोड़ा सा एक 10 सेकंड्स और 15 सेकंड्स एक्स्ट्रा होगा लेकिन द बेस्ट वे. Anybody any doubt you can ask me here. Anybody any doubt you can ask me here. सर ये अगर पैरेलल के जगह से सीरीज R1 प्लस R2 करते सेम मेथडोलॉजी. हाँ इफ यू गिव द अनसर्टेनिटी माय डियर फॉर अनसर्ट सीरीज में सेम बेटा R1 प्लस R2 उसके लिए अब्सोल्यूट वैल्यू ऐड करना है. माइनक राय चौधरी फॉर सीरीज के लिए हमने क्या करना है सीरीज के लिए अब्सोल्यूट वैल्यू को देखना है बस. फॉर सीरीज वी हैव टू कंसीडर द अब्सोल्यूट वैल्यू. Suppose if you are taking the uncertainty, it is given in terms of uncertainty. Somebody was asking uncertainty. 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. Okay. And uncertainty in R1 is given as certain delta R1. Uncertainty in R2 is given as some delta R2. Okay na? Then uncertainty, so this is the uncertainty in R1, this is the uncertainty in R2. Then uncertainty in R कैसे कैलकुलेट करना सिंपल. इसको क्या करो पहले uncertainty in R के लिए 2R by 2R1 whole square into uncertainty in R1 whole square plus 2R by 2R2
होल स्क्वायर अनसर्टेनिटी इन R2। अगर क्वेश्चन में सर्टेनिटी मेंशन किया तो आपने ये फॉर्मूला, ओके। अभी क्या है, 2R/2R1 क्या होगा वो भी करो। 2R/2R1 क्या होगा, प्लीज मेक द पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। क्या होगा 2R/2R1 क्या होगा? इसके लिए हम ऐसा ले सकते हैं, क्या ऐसे कर सकते हैं उसको? और ऐसा डायरेक्टली 1/r से कर सकते हैं ना। टू वेज में कर सकते हैं आप, उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं आप। 2R/2R1 कर सकते डायरेक्टली, -1/r² इज इक्वल टू -1/r1² इंटू 2R1/2R। Yes or not? With respect to that also you can do. Yes, perfectly. Okay, in two ways you can do partial differentiation करके आप आंसर बताइए, ऐसे यूज कर सकते। Okay, don't confuse, in two ways you can do it. You can take the 1/r partial differentiation and we can take the R1 plus R2 का। Perfect. Any doubt? Let us move for the basic instruments. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स का। बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स में हमको क्या क्या आने वाला है, बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स में हमको क्या क्या आने वाला है? PMMC, परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल, नेक्स्ट कम्स द मूविंग आयरन, नेक्स्ट कम्स द डायनामोमीटर मेजरली, next comes the electrostatic voltmeter and miscellaneous instruments like thermal instruments में आपको क्या क्या आएगा? थर्मोकपल टाइप, हॉट वायर टाइप, नेक्स्ट CTPT करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ये पूरा आएगा। PMMC, मूविंग आयरन, डायनामोमीटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर, थर्मल इंस्ट्रूमेंट्स। क्या नितेश, सीरीज कनेक्शन में क्या होगा? सीरीज कनेक्शन में क्या होगा बेटा? सीरीज कनेक्शन में R = R1 + R2 डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं ना। मिनिमम एंड वैल्यू, R1 का अनसर्टेनिटी दिया है डेल R1, R2 का अनसर्टेनिटी दिया है डेल R2, तो सीरीज में उसका एब्सोल्यूट वैल्यूज को ऐड करना है। सीरीज में उसका एब्सोल्यूट वैल्यूज को ऐड करना है। सपोज सीरीज दिया है आपको R = R1 + R2, R1 का एब्सोल्यूट एरर निकालो डेल्टा R1, R2 का एब्सोल्यूट एरर निकालो डेल्टा R2 माय डियर, दैट्स इट। सो 300 ohms है ना, 300 ohms में 1%, दैट मींस प्लस और माइनस 0.3, तो उसका एब्सोल्यूट एरर कितना है? डेल्टा R1 हो गया 0.3 ohms एंड 200 में 1% कितना हो गया? 0.2, तो डेल्टा R2 कितना हो गया? 0.2 हो गया। दैट्स इट माय डियर, उसका एब्सोल्यूट को ऐड करो। सो सीरीज में क्या होगा? एरर 300 + 200 500 प्लस और माइनस उसका एब्सोल्यूट वैल्यू विल बी एडेड 0.5 ohms होगा। दैट्स इट।
क्लियर सर? इसका रिकॉर्डर रहेगा क्या? नेट इश्यू हो रहा है। सो 0.3 प्लस 0.2 अब्सोल्यूट वैल्यू 1 प्लस अब्सोल्यूट वैल्यू 2 कर लो बस, मजा आ गया। एनी डाउट? स्टिल एनी डाउट है आपको? रेसिस्टर्स का प्रॉब्लम जो कुछ भी हो? नो सर, 3 and 2 होगा ना? अच्छा 3%, 3 बाई यस 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 1% ना, सॉरी कितना है 1%, या 1% बोलो तो 3 है ना, 300 में 1% एरर, ओके सॉरी, ये 1% बोलो तो 3 है, सॉरी सॉरी, परफेक्ट परफेक्ट, 1% बोलो तो 3 ohms, 3 ohms, परफेक्ट परफेक्ट, ये 2 ohms, तो पूरा मिला के कितना हो गया 5 ohms, करेक्ट? 1% ऑफ 300, यस यस करेक्ट, 1% ऑफ 300 3 ohms, 3 है ये 2 है, 5 ohms हो गया, मजा आ गया? दिस इज एब्सोल्यूट एरर। ये इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 500 में कितना परसेंटेज आपको 5 होगा? 1%, गॉट इट? सो आंसर क्या होगा? आइदर 500 प्लस और माइनस 5 ohms होगा और 500 प्लस और माइनस 1% होगा रिजल्टेंट, गॉट इट? रिकॉर्ड रहेगा, ये सेशन रहेगा। एब्सोल्यूट वे में क्या है 5 ohms है, परसेंटेज में क्या है 1% है, क्लियर है? अभी क्लियर है? ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये परसेंटेज है, 500 में कितना परसेंट? 1%, मजा आ गया? अला फिर क्लियर माय डियर, जल्दी बताइए, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के पहले आपको पूरा डाउट्स क्लैरिफाई होना है। जी जी जी, and that 1 by r is equal to 1 by r equivalent is equal to r1 r2 by r1 plus sort of कर सकते हैं ना, 1 by v square v into du minus u into dv। जी, ये क्वेश्चन रेंज एक्सटेंशन पे ऊपर आ रहा है, तो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू रेंज एक्सटेंशन माय डियर। सो रेंज एक्सटेंशन के ऊपर ये क्वेश्चन है, तो जल्दी करने की कोशिश कीजिए। रेंज एक्सटेंशन ऑफ द वोल्ट मीटर, IIT मद्रास 2019 का क्वेश्चन है। ए मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट हैविंग अ रेसिस्टेंस ऑफ 10 ohms, having a resistance of 10 ohms gives a full scale deflection when the current is 10 milliamperes. What should be the value of the series resistance so that it can be used as a voltmeter for measuring potential difference of up to 100 volts? Try to do it my dear। अब सब क्लियर हो गया? यस रहेगा बेटा, सद्दाम जी रहेगा, मैंने बोल रहा हूं all PYQ series will be available, don't worry सद्दाम, okay, don't disturb, okay। C गलत है, I think C is the wrong answer, don't be in a hurry my dear। A moving coil instrument having a resistance of 10 ohms gives a full scale deflection when the current is 10 milliamperes. What should be the value of the series resistance so that it can be used as a voltmeter for measuring a potential difference up to 100 volts? मेरे ध्यान से सुनो बेटा, क्वेश्चन रिलेटेड टू वोल्टमीटर। सो आई वांट टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ PMMC वोल्टमीटर। PMMC वोल्टमीटर का डायग्राम क्या होता है? तो ये है हमारा इंडिकेटर एंड ये है मीटर का रेसिस्टेंस। सो दिस इज आवर RM and this is our VM, okay? So a moving coil instrument having a resistance of 10 ohms, so this resistance is given as how much my dear? 10 ohms, gives a full scale deflection when the current is 10 milliamperes. So the current passing here, so the current passing IM, that is how much? Current passing is how much? 10 milliamperes, full scale deflection। What should be the value of series resistance? मैंने एक series resistance को attach कर रहा हूं इधर। So this is the series resistance I am attaching, okay? It is so that it can be used as a voltmeter for measuring a potential difference up to 100 volts. So right now this is हमारा meter। The meter can measure a voltage of, this is the VM, this is our VM, वोल्ट मीटर का वोल्टेज। लेकिन मैंने एक्सटेंड करना चाहता हूं, कहां तक एक्सटेंड करना चाहता हूं? 100 वोल्ट्स तक एक्सटेंड करना चाहता हूं।
whether you connect a series resistor or not, the current passing through this resistor and this resistor both are same. The same current passes through this meter. तो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द सीरीज रेसिस्टर टू बी कनेक्टेड. हमको एक फंडामेंटल फार्मूला है माय डियर, तो ये फार्मूला आप याद कर सकते हैं. याद में नहीं है तो मैंने बहुत सारा बार नंबर ऑफ टाइम्स ये फार्मूला को आपको याद दिया हूं, एंड नंबर ऑफ टाइम्स ये फार्मूला पे मैं ट्रिक सीरीज भी किया हूं, शॉर्ट्स भी किया हूं. सी माय डियर, so if I am taking the VM is equal to what? Voltage drop across the meter, that is Im into Rm. Let us take this as equation 1. And if you take the total voltage is equal to I into, what is the voltage यहाँ? यह पूरा voltage क्या होगा? I into RSC plus RM, क्योंकि सेम करंट जा रहा है, RSC plus RM. So if I am taking V by VM, क्या होगा? V by VM क्या होगा? I into RSC plus RM the whole divided by Im into Rm. And if you see I and Im both are same because ये सीरीज में है, so क्या होगा? ये कैंसिल हो जाएगा. तो यहां से आप इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालो m, and this will be yes. If I am taking this as RSC plus RM by RM, ये क्या होगा? M into RM minus RM is equal to RSC. सीरीज रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है. RSC is equal to RM into M minus 1. M को हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं. यस, तो M is equal to कैपिटल V बाई स्मॉल VM माइनस 1. ये कॉन्सेप्ट है. अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं है, एक सिंपल टेक्निक बताता हूं मैंने. क्या है सिंपल टेक्निक? वोल्ट मीटर के लिए रेसिस्टर सीरीज में रहता है, इसकी वजह से वोल्ट मीटर के लिए रेसिस्टर सीरीज में रहता है, इसकी वजह से M-1 सीरीज में आएगा. M-1 सीरीज में आएगा. अमीटर के लिए ये शंट रेसिस्टेंस, अमीटर के लिए शंट रेसिस्टेंस नीचे होगा, अमीटर के लिए शंट रेसिस्टेंस नीचे होगा. उसके लिए फार्मूला RSH is equal to RM by M-1 होगा. तो प्लीज रिमेंबर दिस 2 पॉइंट्स. नाउ आप ध्यान से ये फार्मूला अप्लाई करके बताइए आंसर कितना होगा. जल्दी बताइए बेटा, आंसर कितना आ रहा है? आई थिंक आपने गलत कर दिया. तो मुझे RSC चाहिए, सीरीज रेजिस्टेंस. मीटर रेजिस्टेंस कितना दिया है? मीटर रेजिस्टेंस दिया है 10 ohms. मीटर रेजिस्टेंस दिया है 10 ohms. कैपिटल V कितना दिया है? कैपिटल V दिया है 100 volts. कैपिटल V दिया है 100 volts. And what is a small Vm, my dear? Small Vm is equal to Im into Rm. ये भूलना मत. Vm is equal to Im into Rm आ चुका है. Im into Rm ले सकते हैं आप. So Im कितना है? 10 मिली एम्पियर्स. 10 into 10 100. ओके, कितना आ रहा है बेटा? 10 into 10 100, 100 into 10 power minus 3, 10 square into 10 power minus 3, 10 power minus 1. तो ये होगा 0.1 वोल्ट होगा. तो दिस इज 0.1 हो गया माइनस 1. तो कितना आएगा? तो 1000 by 1, 1000 minus 1, 1000 minus 1, 9990. सो करेक्ट आंसर है 990 हो गया. जितने लोग ऑप्शन सी या रॉन्ग है, ऑप्शन बी करेक्ट है. मजा आ गया. Some people have given me the answer C. नितेश, आपने पहले सी दिया था. ओके, ऐसा मिस्टेक्स मत करना बेटा. यू अंडरस्टैंड? मजा आ रहा है? और आफ्टर एंजॉइंग, मेरे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, एक बार पीएमएमसी का सर्क्यूट देखो. पीएमएमसी का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में डेफिनेटली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है. पीएमएमसी अमीटर के लिए फॉर्मूला क्या होगा? देखो, ध्यान से देखो. पीएमएमसी अमीटर के लिए क्या होगा? तो ये है हमारा अमीटर IM.
ये है हमारा RM एंड इसके पैरेलल में आपको RSH आएगा, तो दिस इज RSH, ये है हमारा I। तो अभी RSH इज इक्वल टू RM बाई M-1 है। प्लीज नोट डाउन दिस फॉर्मूलास, आई एम एक्सपेक्टिंग डेफिनेटली ए क्वेश्चन फ्रॉम दिस, मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। नेक्स्ट PMMC वोल्टमीटर का रेंज एक्सटेंशन, पक्का आने वाला क्वेश्चन है माय डियर। ये है हमारा सीरीज रेसिस्टेंस, ये है हमारा वोल्टमीटर, ये है हमारा मीटर रेसिस्टेंस एंड सीरीज रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होगा RM इंटू M-1 होगा एंड M इज इक्वल टू कैपिटल V बाई स्मॉल v। मजा आ गया बेटा? ऑल ऑफ यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूलास। मैं बोल रहा हूं आपको पक्का आएगा क्वेश्चन 2023 में, अगर मेजरमेंट्स में रेंज एक्सचेंज पर क्वेश्चन आना पड़े तो ये दो फॉर्मूलास के ऊपर आएगा। शंट रेसिस्टेंस इज कमिंग एट द डाउन, सो फॉर्मूला में M-1 नीचे होगा। शंट पैरेलल में आ रहा है, तो M-1 नीचे आएगा। सिमिलरली सीरीज RSC कमिंग इन सीरीज, सो M-1 सीरीज में आ जाएगा। यस यस, प्लीज डोंट डू मिस्टेक, सिली मिस्टेक्स मत करना। मेजरमेंट्स का क्वेश्चंस बहुत इजी आता है, पक्का। मैं बोल रहा हूं 90s में बिफोर 2005 समवट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते था, समवट बिग बिग क्वेश्चंस लाइक मैथमेटिकल डेरिवेशंस, बिग कैलकुलेशन ऐसा आता था। लेकिन अब क्या हो गया ना, डायरेक्ट हिट क्वेश्चंस आ रहे हैं। आजकल मेजरमेंट्स का क्वेश्चंस डायरेक्ट हिट क्वेश्चंस आ रहे हैं। आराम से आप एक क्वेश्चन आया, दो क्वेश्चन आ, तीन क्वेश्चन आ, whatever may be the marks, 2 marks or 3 marks, don't miss. Okay, try to answer this question my dear. This question MCQ multiple choice IIT गुवाहाटी से आ गया, 2018 का PYQ है, जल्दी से करने की कोशिश कीजिए। Excellent, yes yes, या ये क्वेश्चन कैसा आएगा? ए 0 to 1 एम्पियर मूविंग आयरन अमीटर। तो पहले आपको मूविंग आयरन अमीटर का डायग्राम मालूम होना है। मूविंग आयरन अमीटर अच्छा दिख रहा है, फॉन्ट एवरीथिंग क्लियर है? आप सब लोगों को मेरा लेटर्स, कलर्स, फॉन्ट एवरीथिंग क्लियर है बेटा? कोई चेंज करूं? या परफेक्ट। सो MI अमीटर का सिंबल है MI अमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना है MI में क्या क्या होगा। IM होगा, मीटर रेसिस्टेंस भी होगा, इसके साथ साथ उसको इंडक्टेंस भी हो। तो दिस इज RM एंड दिस इज LM। एंड अगर आपने शंट ले रहे, शंट के लिए आपको RSH होगा, LSH भी होगा। तो ये है शंट। ओके माय डियर, so if you take the voltage drop across this VM and VSH दोनों सेम होगा, this will be IM into ZM होगा, this is ISH into ZSH होगा। so IM by ISH
इज इक्वल टू ZSH बाई ZM होगा। ZSH बोलो तो RSH प्लस J ओमेगा LSH है, एंड दिस इज RM बाई J ओमेगा LM। ऑफ कोर्स स्क्वेयर रूट स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। सो इफ यू टेक RSH स्क्वायर कॉमन, बाहर निकालो, RSH बाहर आएगा, 1 प्लस okay my dear, so this will become omega LSH by RSH whole square, and this will become RM square root of 1 plus omega LM by RM। आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं मैंने, आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं। सो सॉरी, क्या दिया है क्वेश्चन में? सो IM by ISH is equal to RSH by RM, RSH by RM square root of 1 plus omega, this is what time constant of the shunt coil, so is a time constant of the shunt coil, and is the time constant of the meter coil. So this is the expression my dear। अब क्वेश्चन को देखेंगे, मजा आ रहा है आपको? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? ISH अपोजिट है, IM by ISH इक्वल टू RSH by RM। ध्यान से देखो बेटा क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या क्या दिया है क्वेश्चन में? 0 to 1 ampere moving iron ammeter, 0 to 1 ampere, so this is 1 ampere। moving iron ammeter has an internal resistance of 50 milli ohms। कितना है ये कितना बेटा? This is 50 milli ohms। okay, next inductance of 0.1 millihenry, so this is 0.1 millihenry। so he has given RM and LM। next, so a shunt coil is connected to extends range to 10 amperes, so range he has to extend it to 10 amperes, he wants to extend corresponding at all operating frequency, means it is independent of frequency, that means it is suitable for DC as well as AC। the time constant milliseconds and resistant milliohm shunt coil को पूछ रहे। so first of all क्या क्या दिया है information? so for all frequencies it has to work, means for all frequencies it has to work means time constant of the shunt must be equal to time constant of the meter। then condition क्या होगा? IM by ISH is equal to RSH by RM होगा, बस परफेक्ट। हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है? हमारे पास IM का डाटा है, RM का डाटा है, LM का डाटा है, एंड I का डाटा भी है। IM क्या दिया है बेटा? 1 एम्पियर दिया है। RM कितना दिया है? 50 मिली ओम्स दिया है, 50 मिली ओम्स दिया है, एंड LM कितना दिया है? 0.1 मिली हेनरी दिया है, एंड I कितना दिया है? I इज गिवन एज 10 एम्पियर्स। सो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम कांस्टेंट निकाल सकते हैं, टाइम कांस्टेंट। सो व्हाट इज द टाइम कांस्टेंट ऑफ द शंट कॉइल? टाइम कांस्टेंट ऑफ द शंट कॉइल इज इक्वल टू टाइम कांस्टेंट ऑफ द मीटर कॉइल, दैट इज L by R, दैट इज L by R। सो हमारे पास LM RM अवेलेबल है, सो LM RM अवेलेबल है। LM 0.1 मिली हेनरी है, ये 0.1 मिली हेनरी डिवाइड बाय RM 50 मिली ओम्स है। तो मिली मिली कैंसल, 1/500, 1/500 बोलो तो 0.2, 2/1000, दैट मीन्स 2 मिली सेकेंड्स आ रहा है। दिस इज 2 मिली सेकेंड्स टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ द शंट।
नेक्स्ट और क्या पूछा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो, क्वेश्चन केवल 2 मिलीसेकंड्स नहीं है, द टाइम कांस्टेंट मिलीसेकंड्स एंड रेसिस्टेंस ऑफ द शंट पूछ रहे, आरएसएच पूछ रहे। आरएसएच आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्ट फार्मूला से, तो ये फार्मूला से आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं ना। बताओ बेटा कितना आ रहा है, जल्दी बताओ। आरएसएच इज इक्वल टू IM by ISH इंटू RM। कितना है IM 1 एम्पियर है, इस ISH कितना होगा 9 एम्पियर होगा। नेक्स्ट RM कितना है, RM 50 मिली ओम्स, तो कितना आ रहा है 50 by 9 अप्रोक्सीमेटली 5 मिली ओम्स अप्रोक्सीमेटली। कितना है आंसर, 5.55। so the right answer is option A. Option A is the right answer, am I right? Option A। कोई तो आओ, यस अंजलि, परफेक्ट। मजा आ गया। क्वेश्चन इज रिलेटेड टू विच टॉपिक माय डियर, क्वेश्चन इज रिलेटेड टू मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। क्वेश्चन इज रिलेटेड टू मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट एंड वन ऑफ द इजीएस्ट वे टू आंसर द क्वेश्चन इज अ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, ऐसा क्वेश्चन कितने फॉर्म में दे, व्हाटएवर में भी द फॉर्मेट, व्हाटएवर में भी द मेथोडोलॉजी, आपको कितना क्रिस्टल क्लियर होना है ईच एंड एवरी इंस्ट्रूमेंट का सिस्टमेटिक एनालिसिस। एक बार जितने लोग 15 लोग सेशन को देख रहे हैं, 15 पीपल आर वाचिंग द सेशन, मुझे एक बार थम्स अप दिखाइए बेटा। जितने लोग लाइव में हैं, जितने लोग सेशन को अच्छी तरफ से देख रहे हैं, एक बार मुझे थम्स अप दिखाइए। आपको डिफरेंट वेराइटीज ऑफ PYQs मैंने डिस्कस कर रहा हूं, ये पूरा सेशन होने के बाद आपको सब टॉपिक्स में पूरा क्लैरिटी आएगा। या इस क्वेश्चन NET है, क्वेश्चन नंबर ISC बैंगलोर से आ चुका है। 2016 का क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए फटाफट। A DC voltage within ripple is given by V1. This is V1 my dear, this is V1. Oh sorry, this is V of t, this is V of t. So V of t has given my dear. So what is the voltage, DC voltage but having certain ripples. So 100 plus 10 sin omega t plus 5 sin 3 omega t. Measurement of this voltage made by moving coil and moving iron voltmeter. V1 is the meter reading by PMMC and V2 is the meter reading by MI. आपको पता है PMMC measures the average value. So PMMC measures the average value. कितना आएगा average value, that is equal to square root of 100 square. Only average value पता आएगा, that means what, that is 100 volts. Moving iron measures the VRMS. VRMS कितना होगा my dear, that will be 100 square plus 10 by root 2 whole square plus 5 by root 2 whole square. आपको पता है ना, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर, ट्रू RMS मीटर, ये पूरा RMS वैल्यू को आएगा। तो 10 डिवाइड बाई रूट 2 स्क्वायर प्लस 5 डिवाइड बाई रूट 2 कितना आ रहा है देखो, 100 पॉइंट। थैंक यू कमल जी, थैंक यू वेरी मच। सो दिस इज कमिंग एज 100.31 ना, एक बार चेक करके बताइए बेटा। क्योंकि 3 घंटे का सेशन बोलो तो आसान नहीं है बेटा।
इसके लिए फैकल्टी का पूरा तो आपका कमेंट्स 100.31 आ रहा है. सो व्हाट इज द क्वेश्चन आस्क? V2 minus V1 इज आस्किंग V2 minus V1. तो V2 minus V1 बोलो तो कितना होगा? 100.31 माइनस 100 कितना आएगा? 0.31 आ रहा है. सही आंसर है. देखो बेटा कितना सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, इतना सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन आपको एग्जाम में क्या होता है ना, वो एग्जाम में प्रेशराइज के सिचुएशन में क्या करते हैं? मिस्टेक्स करते हैं, सिल्ली मिस्टेक्स करते हैं. आप सिल्ली मिस्टेक्स करते हैं. गॉट इट माय डियर? लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश कीजिए. आई थिंक आई विल राइट द ऑप्शंस हियर. ऑप्शन ए P1 2 R1 S3. ऑप्शन बी P1 3 R1. ऑप्शन सी P1 2 R3 S3. ऑप्शन डी P3 1 R2 S1. ये आंसर मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं. आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर फॉर दिस क्वेश्चन फ्रॉम यूर साइड. 15 बच्चे देख रहे हैं, 15 स्टूडेंट्स आर वाचिंग. फ्रॉम द 15 स्टूडेंट्स आई वांट टू सी द आंसर. सर सी. ओके, जितने लोग आंसर दिया है ओके. इटाची सी, अंजलि कुमारी सी, माइनक राय चौधरी सी, प्रतीक शर्मा सी. ओके, लेट अस सी आंसर इज सी. और तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल पक्का डीसी है, क्योंकि एवरेज वैल्यू दिखाएगा. एवरेज इफ यू टेक द एसी मेजरमेंट क्या होगा, उसका एवरेज टॉर्क 0 हो जाएगा. तो दिस इज ओनली फॉर डीसी. मूविंग आयरन एक्चुअली एसी एंड डीसी है. मूविंग आयरन एक्चुअली एसी एंड डीसी. am I right or not? मूविंग आयरन कैन बी सुटेबल फॉर एसी एंड डीसी. लेकिन क्या दिया है क्वेश्चन में? इट इज कनेक्टेड टू ए करंट ट्रांसफार्मर. when it is connected with a current transformer, current transfer बोलो तो it is having number of turns. that means वो डीसी को मेजरमेंट नहीं कर सकता, केवल एसी को मेजरमेंट कर सकता. सो क्यू में मूविंग आयरन इज सुटेबल फॉर एसी प्लस डीसी. लेकिन once moving iron is clubbed with the current transformer, it is suitable only for AC. तो ऑप्शन Q के लिए भी AC होगा. नेक्स्ट रेक्टिफायर. बेटा रेक्टिफायर आपको पता है इट इज सुटेबल फॉर AC एज वेल एज DC, क्योंकि अगर आपने AC दिया उसको रेक्टिफाई करके आपको DC दिखाता है, अगर आपने DC दिया उसको अलो करता है. सो इलेक्ट्रोडायनामोमीटर is for both AC and DC. So
परमानेंट मैग्नेट इज फॉर डीसी, सो ऑप्शन सी सही आंसर हो गया। Q2 होगा, Q2 होगा, yes, AC only, R3, very good. So the right answer goes to option। मजा आ गया बेटा? क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। MI बोथ हो गया AC एंड DC। नितेश जी बी रॉन्ग आंसर है, क्योंकि मूविंग आयरन कैन मेजर AC एंड DC, लेकिन मूविंग आयरन इज कनेक्टेड वाया CT माय डियर। मूविंग आयरन इज कनेक्टेड वाया CT। CT में क्या है? नंबर ऑफ टन्स। नंबर ऑफ टन्स क्या होगा CT में? नंबर ऑफ टन्स लेस होगा ना। N2 विल बी N1 by N2 is equal to V1 by V2 is equal to I2 by I1 ना। yes or not? So अब क्या करते हैं? अभी इधर नंबर ऑफ टन्स को कम करते हैं, and you are attaching here one meter. So this particular meter is now dynamometer. Suppose if you are attaching the moving iron you are attaching. So what you are getting here is the AC na, AC component, not the DC. So that is a twist. Plus नितेश कुमार समझ में आपको? तो दिस अवर CT का डायग्राम है। टर्न्स की कॉन्सेप्ट है, डीसी का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है इधर। ये केवल मूविंग आयरन नहीं है बेटा, मूविंग आयरन अलॉन्ग विद CT करंट ट्रांसफॉर्म। गॉट इट? फटाफट आंसर कर दिए। 9th क्वेश्चन IIT कानपुर 2015 का क्वेश्चन है, फटाफट कर दिए। 0 to 50 amperes ammeter, 0 to 50 amperes moving coil ammeter has a voltage drop of 0.1 volts across its terminals at full scale deflection. The external shunt resistance। ऐसा क्वेश्चंस के लिए पक्का डायग्राम लिखो बेटा। व्हेन यू राइट द डायग्राम आपको क्लैरिटी आएगा। तो दिस इज आवर RM एंड ये होगा हमारा RSH, ये है हमारा I। तो सिंपल की बात है, RSH इज इक्वल टू RM by M-1 होगा। सिंपल की बात है। तो a 0 to 50 amperes, that means this is 50, has a voltage drop of 0.1 volt across its terminals. So this voltage drop is 0.1 volt. So PM is equal to IM into RM my dear. So this is 0.1 volt. IM कितना दिया है? 50 amperes ना, या तो RM आप निकाल सकते हैं। RM कितना होगा? 0.1 by 50 होगा। 0.1 by 50 बोलो तो 1 by 10, that means 1 by 500. So this is 1 by 500, that means 0.2, 2 by 100, 2 by 1000, so 2 milliohms होगा मीटर रेसिस्टेंस। नेक्स्ट, द एक्सटर्नल शंट रेसिस्टेंस चाहिए needed to extend range 0 to 500 amperes. So I कितना दिया है? 500 amperes. तो आप डायरेक्टली M निकाल सकते हैं ना डायरेक्टली आराम से। गुड इवनिंग कमल प्रदीप सिंह, फटाफट M कितना है? जल्दी भाई, पक्का बोल रहा हूँ। रेंज एक्सटेंशन के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन आ चुका है एंड एवरी टाइम क्वेश्चन आया बच्चे मिस्टेक करता है। आई बाय IM मीटर रेजिस्टेंस कितना दिया है? मीटर का करंट 50, so that means it is coming around 10। तो RSH का वैल्यू कितना होगा? RM is equal to 2 milliohms and this approximately 10 minus 1, 9, 2 by 9, 0.222 milliohms आ रहा है। Am I right? Am I right my dear? कितना आ रहा है आंसर? जल्दी बताओ बेटा। 0.222 milliohms आ रहा है। सर नो, क्या हो गया? कोई आंसर नहीं दे रहे मुझे। हाँ, 2 by 9000 9000 कैसा आएगा? 9000 कैसा आएगा? 500 amperes by 50 amperes, 0.222। मिस्टेक किया अंजलि, आंसर जल्दी बताइए। 0.222 मिलीओम्स है। हाँ, वेरी गुड मिलीओम्स में दिया। हाँ राइट मिलीओम्स क्वेश्चन में पूछ दिया है, मिलीओम्स।
So I hope none of you will miss the mark if a question comes from the range extension. Am I right or not? I think everybody of this class, those who are attending this session, nobody is going to miss the range extension problem. Yes, millions. Let us go for the next question. Yeah, try to answer this question. IIT Kharagpur का question है, 2014 का question है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है. कैलकुलेशन करके बताएं. हाँ, ओके, नो प्रॉब्लम. Try to solve this question, my dear. Yes, correct. बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है. आईआईटी खड़गपुर का क्वेश्चन बेहतरीन होता है. आईआईटी खड़गपुर का क्वेश्चन सुपर क्वेश्चंस रहता है. आईआईटी खड़गपुर का एक क्वेश्चन ऐसा है, 2 ammeters बेटा, 2 ammeters X and Y have internal resistance of. क्वेश्चन लेंथी है लेकिन थोड़ा ध्यान से सुनो, जल्दी करने की कोशिश कीजिए. 2 ammeters X and Y have internal resistance of 1.2 ohms and 1.5 ohms respectively, and they give full scale deflection with 150 milliamperes and 250 milliamperes respectively. That means क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 ammeters है, 2 ammeters का internal resistance दिया है and their full scale current दिया है. The ranges have been extended by connecting shunts so as to give full scale deflection with 15 amperes. So 150 milliamperes, 250 milliamperes है ना, उसका ranges they are extended towards कितना है, 15 amperes. The ammeters along with shunts are connected in parallel and then placed in a circuit in which the total current flowing is 15 amperes. क्वेश्चन कैसा दिख रहा है आपको? क्वेश्चन को देखने से आपको क्या समझ में आ रहा है? क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है लेकिन कैसा करना है क्वेश्चन को? 2 ammeters X and Y. So first let us take ammeter X and Y. So this is ammeter. So this is IM, this RM, this is RSH. तो क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है क्वेश्चन के बारे में, देखो ध्यान से सुनो. नेक्स्ट, दिस Y, IM, RM, RSH. So what is the information given? 2 ammeters X and Y have internal resistance of 1.0 ohms and 1.5 ohms respectively. So this is 1.2 ohms and 1.5 ohms. So this is 1.2 ohms. This is 1.5 ohms respectively. Next, they give full scale deflection with 150, 250. So this is 150 milliamperes. This is 250 milliamperes. The ranges have been extended by connecting shunts so as to give full scale deflection with 15 amperes. So 15 amperes. तो फटाफट आप क्या निकाल सकते हैं? What is the thing that you can get now? Immediately आप क्या निकाल सकते हैं बेटा, जल्दी बताइए. Excellent, excellent प्रतीक शर्मा, कहाँ से हो आप? Very good. So first we have to calculate RSH1. RSH2 जल्दी से निकाल सकते हैं ना. तो RSH1 क्या होगा? RM by M-1. So RM कितना है बेटा? RM is equal to 1.2. देखो कितना नंबर ऑफ टाइम से फार्मूला टच हो रहा है. एवरी टाइम नंबर ऑफ टाइम्स दिस फार्मूला टच हो रहा है बेटा, मिस मत करना. M is equal to I by IM, that is 15 by 15 amperes, 150 milliamperes. I by IM 150 into 10 power minus 3 minus 1. एक बार सिंप्लीफाई करके बताइए बेटा. It is 0.012 ohms आ रहा है. Am I right? तो RSH1 कितना आ रहा है? Am I right or not? Please जल्दी अपडेट कर दीजिए. 0.012 ohms आ रहा है. Yes, very good, very good, very good, very good my dear, very good. Next RH2 कितना आ रहा है? RSH
1 RSH2 RSH2 कितना है RM बाई फटाफट M-1 मीटर रेजिस्टेंस कितना इधर 1.5 है, डोंट कंफ्यूज 1.5 इधर, एंड इसका वैल्यूज कितना है 250 I by IM ना, I by I 15 by 250 इंटू 10⁻³ - 1 फटाफट जल्दी बताइए बेटा, तो कितना आएगा 15 डिवाइड बाई 250 2000 -1 1.5 डिवाइड बाई आंसर कितना आ रहा है 0.025 आ रहा है। RSH2 कितना आ रहा है 0.025 ओम। यहां तक सही है, जितने लोग सेशन को देख रहे हैं यहां तक सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। The ranges have been extended by connecting shunts so as to give full scale differential impedance. The ammeters along with the shunts are connected in parallel and then placed in a circuit. So next क्या कर दिया, ये particular ammeter along with the shunt. That means what? That means what, my dear? First ammeter along with the shunt. So this is RSH1. And next another ammeter RSH2. मजा आ रहा है बेटा। So this is RSH1, this is RM1, this is RSH2, this is RM2 connected in parallel to get a current of how much? I current. They are connected in parallel. That is a 15 amperes. So first of all, please take this as X. कैलकुलेट कर दो, जल्दी बताइए जल्दी बताइए। RSH1 कितना है जल्दी बताइए बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। RSH1 कितना है 0.012 ohms, दिस इज 0.012 है। एंड RM1 कितना है, RM1 कितना है 1.2 ohms, this is 1.2 ohms, this is 1.5 ohms, this is 0.025 ohms, 0.025 ohms. So please calculate this as Rx. Okay, now please calculate Rx and please calculate this as Ry. कितना आ रहा है Rx Ry का वैल्यूज कितना आ रहा है जल्दी बताइए बेटा Rx. And what is the current coming now? That is the 15 amperes current is coming. 15 amperes current is coming. So this is the current passing through Ix. This is the current passing through Iy. Question क्या पूछा हमको? Question पूछ रहा है the current in amperes indicated in ammeter X. So if you take this as ammeter X, so current in X can be taken as opposite resistance Ry by Ry plus Rx into I ले सकता हूं मैंने। एक बार जल्दी बताइए बेटा Rx का वैल्यू कितना आ गया, जितने लोग सेशन को कर रहे प्लीज टेल मी व्हाट इज Rx and Ry। 0.011 0.0 yes 0.011 very good I'm not doing better, please do calculation, I'm taking the calculation। सही है ये वैल्यू 0.011। Ry कितना आ गया बेटा, Ry कितना बोल रहे हैं 0.024 वेरी गुड पॉइंट। देखो ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्या है, ये मेजरमेंट्स एंड नेटवर्क थ्योरी, मेजरमेंट्स एंड नेटवर्क थ्योरी का कॉन्सेप्ट जुड़ा के आ गया, मेजरमेंट्स एंड करंट डिवीजन का फॉर्मूला। देखो बेटा कितना इजी क्वेश्चन आ गया, तो फटाफट कर दीजिए बेटा दिस क्वेश्चन 0.024 डिवाइडेड बाय 0.024 प्लस 0.021 कितना आएगा 0.024 प्लस 0.011 मिला के कितना आ गया 0.035 0.035 इंटू करंट कितना आ रहा है 15 एम्पियर्स। आंसर कितना आ गया, आंसर कितना आ रहा है 10.28 एम्पियर्स आ रहा है मुझे। तो द Ix इज इक्वल टू हाउ मच 10.28 एम्पियर। मजा आ गया, व्हाट ए क्वेश्चन इट इज, व्हाट ए क्वेश्चन इट इज। इतना टाइम लिया लेकिन एक सुपर क्वेश्चन है 10.2। All of you enjoyed my dear,
यस, वेरी गुड, 10.28, 10.28 my dear, नहीं सर प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए सर, कुछ मिस हो रहा है। कमल जी कहाँ मिस हो गया बेटा? ओके ओके, ध्यान से सुन, मैं क्या बोल रहा हूं आपको। फर्स्ट एक अम्मीटर दिया है, अम्मीटर एक्स, फटाफट दीजिए। अम्मीटर एक्स का इंफॉर्मेशन दिया है, मीटर का करंट 150 मिली एम्पियर है, मीटर का रेजिस्टेंस 1.2 ओम्स है, इस रेंज इज एक्सटेंडेबल टू 15 एम्पियर्स। शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू नहीं दिया है, तो फर्स्ट स्टेप में मैं शंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर दिया। मीटर वाई का सेम टू सेम है, लेकिन आई एम इज इक्वल टू 250 मिली एम्पियर से, इसमें भी आर एस एच टू कैलकुलेट कर। सेकंड क्या पूछ रहे हैं ना, दिस टाइम द टू अमीटर्स आर कनेक्टेड पैरेलल। ये फर्स्ट अमीटर सेपरेटली है, ये सेकंड अमीटर सेपरेटली है, लेकिन केस 2 में क्या कर रहे हैं, टू अमीटर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। When two ammeters are connected in parallel, individual meter resistance and shunt resistance of X ammeter, individual meter resistance and shunt resistance of Y ammeter will come like this. तो ये पूरा मिला के एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, ये पूरा मिला के पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, ये पूरा मिला के कॉम्बिनेशन हो गया RX 0.011, ये पूरा मिला के और एक कॉम्बिनेशन हो गया RY 0.02। Now a range action कितने तक चले गया, 15 amperes. Now the point is the 15 amperes of the current has to divide into this X ammeter and this Y ammeter. Question पूछ रहा है what is the meter current that is passing through the X? तो उसके लिए हम नेटवर्क थ्योरी का करंट डिवीजन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अपने सर्क्यूट थ्योरी में पढ़ चुका है ऑलरेडी। टू रेसिस्टर्स आर इन पैरेलल, करंट पासिंग थ्रू दिस रेसिस्टर इज इक्वल टू अपोजिट रेसिस्टेंस बाय टोटल रेसिस्टेंस। करंट डिवीजन का फॉर्मूला यूज किया मैंने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ नितेश जी, ये क्वेश्चन एक्चुअली क्या है ना बेटा, आजकल क्या है ना, मेजरमेंट्स एक्चुअली बेसिकली ड्राई सब्जेक्ट है। अगर कोर मेजरमेंट्स पर क्वेश्चन पूछना पड़े तो बहुत दिक्कत होगा बच्चों को। कोर मेजरमेंट्स पर टार्क एक्सप्रेशंस देना, डिफ्लेक्शन टार्क, कंट्रोलिंग टार्क, आजकल क्या हो रहा है, कोर मेजरमेंट्स के ऊपर क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। क्वेश्चंस आर कमिंग एज इंटीग्रेशन टाइप, क्वेश्चंस आर कमिंग एज इंटीग्रेशन टाइप बेटा, मेजरमेंट्स विद नेटवर्क्स, मेजरमेंट्स विद डायोड्स, मेजरमेंट्स विद एनालॉग, मेजरमेंट विद ब्रिजेस, ऐसा पूछ। चलो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। या 12th क्वेश्चन माय डियर, फटाफट आंसर कर दीजिए, फटाफट आंसर कर दिए। क्वेश्चन रिलेटेड टू व्हाट, क्वेश्चन रिलेटेड टू मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट मेजर्स द आरएमएस वैल्यू। डायरेक्टली आप बोल सकते हैं, नेटवर्क थ्योरी में आपने पढ़ चुका है, the sawtooth voltage waveform shown in the figure is fed to a moving iron voltmeter reading would be। टू मेथड से हम कर सकते हैं, टू मेथड से हम कर सकते हैं। एक मेथड 0 to 20 वेवफॉर्म निकालो, that's it, 1/t 0 to 20। सिमेट्रिकल वेवफॉर्म, डायरेक्टली आंसर कितना है, यस, दिस इज नथिंग बट PRMS PM/√3। कितना आएगा, टाइम सेव करता है आपको, आंसर कितना है, 57.73 वोल्ट। मजा आ गया आपको, यस यस, पूरा कर ले। ऑलरेडी ऐसा भी कर सकते हैं आप, और 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t v of t, रैंप वेव, ऐसा भी निकल सकते हो। ओके चलो, कर सकते ना, आई होप यू कैन डू दिस प्रॉब्लम, नॉट अ बिग डील। वी ऑफ टी निकालो,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आईआईटी खड़गपुर का क्वेश्चन है, 2014 का क्वेश्चन है, जल्दी करने की कोशिश कीजिए बस। चलो, यू कैन डू इट राइट। क्या हो गया? डायरेक्टली आपने नेटवर्क थ्योरी में पढ़ा है ना, आरएमएस वैल्यू ऑफ अ सॉटूथ वेव फॉर्म। The DC current flowing in a circuit is measured by two ammeters, one PMMC and another electrodynamometer type, connected in series. The PMMC meter contains 100 turns in the coil. The flux density in the air gap is 0.2 Weber per meter square, and the area of this coil is given as 80 mm square. Here, 80 mm square. The electrodynamometer has a change in mutual inductance with respect to deflection of 0.5 millihenry per degree. The spring constants of both the meters are equal. The value of the current at the deflections of two meters same. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुपर्ब क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझ में आपको क्वेश्चन लेंथी दिख रहा है? आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन डू दैट इंटीग्रेशन 1/t स्क्वायर रूट ऑफ 0 to t v of t होल स्क्वायर dt। अब कर सकते हैं ना? एनी प्रॉब्लम विद दैट प्रॉब्लम, प्रीवियस प्रॉब्लम? क्या ये कैसा आएगा? तो इसके लिए हम फर्स्ट लेट अस टेक टू थिंग्स, PMMC एंड डायनामोमीटर। आपको ये फॉर्मूलास याद रखना है। PMMC में क्या डाटा दिया है? The DC current flowing in a circuit measured by two ammeters, one PMMC, other one is dynamometer connected in series. The PMMC contains 100 turns, so N is given 100 turns. N is given as 100 turns, and the flux density is given as 0.2 Weber per meter square. So this B is equal to 0.2 Weber per meter square. Next, the area of the coil is 80 mm square. Area of the coil is 80 mm square. Next, the electrodynamometer has a change in mutual inductance as 0.5 millihenry per degree. So dm by d theta, my dear, that is 0.5 millihenry per degree दिया है। Next, the spring constants of the both the meters are equal, so K and K equal here. Next, the value of the current at the deflections of these. So what is the deflection torque formula? Deflection torque formula here is equal to bina. And what is the deflection torque formula? हाँ विकास कुमार, क्वेश्चन लेंथी है लेकिन फॉर्मूला सिंपल है। डिफ्लेक्शन टॉर्क फॉर्मूला इज इक्वल टू आई स्क्वायर dm by d theta. So he's asking what is the value of the current at which the deflections are same. That means bina equal to I square dm by d theta. So one I gets cancelled, my dear. So one I gets cancelled. So bina by dm by d theta is equal to I. Substitute करो। B दिया है 100, N दिया है B दिया है, मैग्नेटिक फ्लक्स टर्न्स दिया है 0.2, नंबर ऑफ टर्न्स इज गिवन एज 100,
area is given as 80 mm square, 80 into 10 power minus 6 divided by dm by deta 0.5 into 10 power minus, सिंप्लीफाई करो कितना आएगा, चेक करो जल्दी से बताओ. 0.2 into 100 into 80 into 10 power 3.2 amperes are. What is the right answer? Right answer for 0.2. सही है. वेरी गुड अंजलि, एक्सलेंट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट. ये क्वेश्चन आंसर कर दीजिए. एमसीक्यू है, एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 14 आईआईटी बॉम्बे 2013 का क्वेश्चन है. 2013 का क्वेश्चन है. 3 मूविंग आयरन वोल्ट मीटर्स, 3 मूविंग आयरन, मीटर 1, मीटर 2, मीटर 3, 3 मूविंग आयरन वोल्ट मीटर्स, 3 moving iron type voltmeters are connected as shown below. Voltmeter readings are V, V1, V2 indicated. The correct relation among the voltmeter readings is asking the correct relation. So what is the correct relation? As per the KVL, V should be equal to, but we have to understand what is the V1. V1 is equal to the same current is traveling here and here. So what we can write? Same current is traveling. So we can write V1 expression and V2 expression. Am I right? Vikas Kumar, when you solve the problem, I understand, but when I want to solve, mind totally blank. That is because of lack of confidence, my dear Vikas. That is because of lack of confidence. The lack of confidence, how to overcome that, you have to practice. You have to keep paper and pen on your own 1 to 2 times. How many times you feel like that mind blocked? That many times you try on your own, again and again you try on your own. One day you will get that confidence. Don't worry. Yeah. So what is the V1 here? So हम निकाल सकते here. V1 is equal to current I. Same current is traveling, my dear. Current is same. So I into minus J1. So this is minus J1. Next, what is V2? V2 same current is traveling and J2 ohms. Okay. So these are the things. So as per the KVL, what is the KVL? V is equal to V1 plus V2 होना है, or not? But if you see the RMS value, what is the RMS value of V1? So this RMS value क्या होगा? This RMS value क्या होगा? I होगा. And what is the RMS value of V2 क्या होगा? That is a 2I होगा. So V is equal to V1 plus V2 relation satisfy होना है. That means क्या? How to satisfy this relation? How it is possible? The applied voltage, yes, easy था, but questions language बहुत ज़्यादा, गेट में बहुत लॉन्ग, इससे क्वेश्चन छोड़ देते हैं. या दैट इज अ पॉइंट. एक्चुअली गेट में क्या होता है ना, क्वेश्चंस लॉन्ग दिखता है, लेकिन दिखने में लॉन्ग है, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा टाइम, थोड़ा 10 seconds 2 seconds extra time, you study the problem carefully, then easily you can do it. Okay, got it? So if you see here, 1 minus J1 into I plus J2 into I, so कितना हो रहा है ये? कितना हो रहा है? J into I हो रहा है. So the relation क्या आना चाहिए अभी? V1 plus V2 is not satisfied. V1 is equal to I, V2 is equal to 2I. That means if you take the magnitude of V, that is coming as I. So the magnitude of V should be coming as I. Are you understanding this point? The magnitude of V is matching with what? The magnitude of V2 minus
वेरी गुड क्वेश्चन। सी माय डियर, V1 लिया मैंने, V2 लिया हूं। V1 RMS क्या होगा? I होगा। V2 RMS क्या होगा? 2I होगा। As per the Kirchhoff voltage law, supply voltage should be equal to V1 plus V2 होना है। तो दिस इज V1, दिस इज V2, समेशन करें तो क्या होगा? I होगा, I into J होगा। उसका RMS क्या होगा? I होगा। So V should be I, but individually V1, V2 or I, 2I. That means what? V is equal to V2 minus V1. So option D is the very good question. छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है। Super, super. Next question, try to do it. Next question is related to some application of the PMMC. Question number 15. The input impedance of the permanent magnet moving coil PMMC voltmeter is infinite. Assuming that the diode shown in the figure below is ideal, the reading of the voltmeter means here. That means the reading of the voltmeter is nothing but the voltage across this particular resistor. So please try to answer this question. Question कैसे करना है? ये question is related to application of diode with respect to PMMC. Case A, ये particular waveform जो कुछ दे रहे हैं आपने sinusoidal waveform दे रहे हैं। तो अगर आइडियल डायोड है तो आइडियल डायोड फॉर द पॉजिटिव साइकिल क्या होगा, फॉर द नेगेटिव साइकिल क्या होगा, एक बार ध्यान से बताइए। फॉर द पॉजिटिव साइकिल द डायोड कंडक्ट्स ओनली इन फॉरवर्ड बायस। तो क्या होगा? पॉजिटिव साइकिल के लिए डायोड शॉर्ट सर्किट होगा, सो पूरा करंट इधर ही जाएगा, देन द वोल्टेज अवेलेबल विल बी 0 हियर माय डियर। फॉर द फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल क्या होगा? तो फॉर द पॉजिटिव साइकिल व्हाट इज द वोल्टेज अवेलेबल? V0। फॉर द पॉजिटिव साइकिल क्या होगा? जल्दी बताइए बेटा। तो ये पीक वोल्टेज दिया है 14.14, दैट इज ओके, दैट इज लीव इट। बट फॉर द पॉजिटिव साइकिल क्या होगा? डायोड विल बी शॉर्टेड। व्हेन द डायोड इज शॉर्टेड, दैट मींस द करंट ट्रैवल्स लाइक दिस, द करंट पासिंग हियर विल बी 0। व्हेन करंट पासिंग हियर इज इक्वल टू 0, तो V0 इज इक्वल टू, जल्दी बताइए बेटा। So in which cycle you are going to get the output voltage? For the positive half cycle or for the negative half cycle? For the negative half cycle you are going to get the reading, yes or not? That means, see here, you see the waveform, this is 0, this pi, this 2 pi, right? So for the, this is our input, बट डायोड जो कुछ हमने डायोड देख रहे हैं ना V0, तो V0 क्या होगा? फॉर द पॉजिटिव साइकिल नो प्रॉब्लम, will be conducting, output will be 0, V0 will be 0, but we are going to have a negative cycle only. So for the positive cycle the voltage is equal to 0, for the negative cycle it is pi to 2 pi average value. So V0 is equal to positive or negative? Definitely बताइए आपने। V0 will be negative, so V output will be negative. So what is the negative average? That is a negative average value. Why? Because PMMC measures the average value na. Yes. How to find out this average value? Minus 1 by T. Am I right or not? Minus 1 by T. So what is the T here? The T is equal to 2 pi. And what are the limits I have to take? The limits are pi to 2 pi. Or not? Pi to 2 pi. And what is the voltage we are having? The voltage available is Vm sin omega t. Yes or not? So that is Vm sin omega t to d omega t. So if you simplify that, how much you are going to get? Please calculate and tell me. Please calculate and tell me. All of you, please calculate and tell me. This will be minus 1 by 2 pi. This Vm is nothing but 14 point. This peak is how much, my dear? Peak is how much? 14 point. So this is pi to 2 pi. This is 14.14 sin omega t d omega t. इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्या होगा? जल्दी बताइए बेटा, कितना आ रहा है आपका आंसर? इंटीग्रेशन ऑफ दिस cos हो ना? Yes. Sin x cos of cos minus cos x. Why? Because integration of cos will be minus sin. Okay. Differentiation of cos will be minus sin. That means this will be minus.
तो कितना आ रहा है आपका आंसर, जल्दी बताइए। तो E नॉट विल बी -1/2 पाई 14.14 बाहर निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन बोलो तो cos माइनस पाई, that means -1/2 पाई 14.14 cos of 2 पाई माइनस cos पाई। मजा आ रहा है आपको? आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस बेटा, तो कितना आएगा आंसर? cos 360 minus cos 180 coming 2 minus 2 minus 2 minus plus 2, so 1/2 पाई 14.14 into 2 होगा, so 2 gets cancel, 14.14 divided by 3.14 मुझे आ रहा है आंसर 4.50 आ रहा है। Am I right or not, my dear? प्लीज मुझे आंसर बताइए। जितना सर आई गिव 4 full mark test but I get less marks, I get fear when lengthy question comes on screen, how to overcome from this problem? फर्स्ट ये आंसर बताओ विकास जी। सब लोगों को ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हो गया? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डायोड विद द पीएमएमसी, पीएमएमसी मेजर्स द एवरेज वैल्यू ऑफ दिस कर्व। पीएमएमसी को सामने कितना वोल्टेज अवेलेबल है बेटा? पॉजिटिव वोल्टेज अवेलेबल है, नेगेटिव वोल्टेज अवेलेबल है। When diode conducts in the forward bias, diode gets a short circuit, so positive cycle is not available for the PMMC. Across the resistor क्या वोल्टेज अवेलेबल है? ये रेसिस्टर के अक्रॉस कब वोल्टेज अवेलेबल होगा? ये रेसिस्टर के अक्रॉस व्हेन डायोड कंडक्ट्स इन द फॉर द नेगेटिव साइकिल, क्योंकि पॉजिटिव साइकिल के लिए डायोड शॉर्ट सर्किट होगा, पूरा करंट इधर ही जाएगा। ओके, सो नेगेटिव के लिए क्या होगा? हमको क्लिप होगा, सो द नेगेटिव क्लिप ओनली हमारा आंसर है। लेकिन पीएमएमसी कनेक्ट किया आपने, अगर पीएमएमसी कनेक्ट करो तो एवरेज वैल्यू आएगा। बहुत मजा आ रहा है सर, कंप्लीट रिवीजन हो जा रहा है। थैंक यू थैंक यू। नेगेटिव, सो देखो बेटा, अगर इलेक्ट्रिकल बच्चे देख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल बच्चे, आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है सब्जेक्ट, आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट है, आपको डायोड के बारे में फुल कॉन्सेप्ट है ना। डायोड का एवरेज वैल्यू क्या है? वी एवरेज, वी आर एम, वी पीक टू पीक, वी डीसी, वी रिपल फैक्टर, एवरीथिंग आपको अवेलेबल है। देखो क्वेश्चन कैसा आ रहा है, जहां आउटपुट वी एवरेज आ रहा है, जहां आपको डायोड का आउटपुट आ रहा है, तो पीएमएमसी कनेक्ट किया, पीएमएमसी मेजर वी एवरेज, हियर द कांसेप्ट इज वी एवरेज। अगर पीएमएमसी के प्लेस में मूविंग करंट कनेक्ट किया, अगर पीएमएमसी प्लेस में मूविंग करंट कनेक्ट किया, फार्मूला क्या होगा बेटा? 1/t 0 to t रूट ओवर v ऑफ t होल स्क्वायर dt होगा। समझ में आपको? सेम क्वेश्चन ऐसा भी पूछ कर सकता है ना। इन द प्लेस ऑफ पीएमएमसी टुमारो यू कैन कीप अ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, एंड मूविंग आयरन के लिए फार्मूला कैसा होगा? एवरीथिंग सेम माय डियर, 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 t स्क्वायर रूट ऑफ v ऑफ t होल स्क्वायर d ऑफ t होगा। Am I right or not, my dear? आंसर कितना आ रहा है? 4 पॉइंट। मैं बोलता हूं आपको विकास जी, आपको डाउट सॉल्व करता हूं मैंने एक बार, बस ध्यान से सुनो। व्हाट इज राइट आंसर? 4.46। मजा आ गया? लेंथी क्वेश्चन है हाँ। 2013 का क्वेश्चन, मेजरमेंट्स का विड्थ ऐसा है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन या बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। एमसीक्यू आईआईटी दिल्ली 2012 का क्वेश्चन है, आईआईटी दिल्ली 2012 का क्वेश्चन है। एनालॉग वोल्टमीटर यूजेस एक्सटर्नल मल्टीप्लायर सेटिंग्स with a multiplier setting of 20 kilo ohms it reads 440 volts, with a multiplier setting of 80 kilo ohms it reads 352 volts, for a multiplier setting of 40 kilo ohms, very good question, it's a multi range voltmeter. Yes yes, average value my dear, average value, this is a multi range voltmeter. तो क्वेश्चन को कैसे अंडरस्टैंड करना है?
तो मल्टी रेंज वोल्टमीटर है, फटाफट ट्राई टू अंडरस्टैंड. So there is multi range voltmeter, 3 resistor settings है. is one resistor, okay, got it. एंड ये है हमारा मीटर, इस इज हमारा मीटर है, हमारा मीटर का रेसिस्टेंस RM है. and this meter is going to connect to any one of them. This particular meter is going to connect to any one of them. Okay, so this is our supply, our VS supply voltage. क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, analog voltmeter uses external multiplier settings with a multiplier setting of 20 kilo ohms. तो क्या क्या है वैल्यूज, this is 20 kilo ohms and फटाफट it reads 440 volts and for the multiplier setting of 80 kilo ohms, 80 kilo ohms. This is last one is a 40 kilo ohms. All of understood. And meter resistance कितना है हमको पता नहीं, meter resistance not given. Yeah, but what is the information given? देखो, first with a multiplier setting of 20 kilo ohms it reads 440 volts. First let us take the picture. If it is connected to this 20 kilo ohms, what is the voltage available across the meter? Try to understand. If it is connected here, so what is the voltage available across the meter? You understand or not, my dear? When it is connected with a multiplier setting of 20 kilo ohms, it reads 440 volts. 440 volts. तो यहां से आप एक एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं ना, सप्लाई वोल्टेज, एक सर्क्यूट बन गया, ये सर्क्यूट बन गया ऐसा. Now this is the path of the circuit ना, so that means the circuit I can write like this. This is supply, this is our 20k and this is our meter resistance, we don't know, and the voltage across the meter कितना है 440 volts. तो यहां से आप एक इक्वेशन निकाल सकते हैं ना बेटा, व्हाट इज द VM? VM इज इक्वल टू RM बाय RM प्लस 20k इंटू PS. तो व्हाट इज दिस VM? 440. तो 440 इज इक्वल टू RM इंटू PS, क्योंकि RM फिक्स्ड है, मीटर रेजिस्टेंस फिक्स्ड है, सप्लाई वोल्टेज फिक्स्ड है, तो RM प्लस 20k. तो यहां से आप एक एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं. व्हाट इज द एक्सप्रेशन? द एक्सप्रेशन इज PS इंटू RM इक्वल टू 440 इंटू RM प्लस 20k हो गया. RM प्लस, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. मजा आ गया बेटा? यू अंडरस्टैंड और नॉट माय डियर? जल्दी बताइए, जल्दी बताया बेटा, जल्दी बताइए. जितने लोग सेशन को देख रहे, फर्स्ट इंफॉर्मेशन से मैंने एक फर्स्ट इक्वेशन निकाल दिया. सिंपल यार, 20k 80k 40k का सेटिंग है, पहले 20k अटैच कर दिया, देन मीटर का वोल्टेज 440 वोल्ट्स आ गया. बेसिक वोल्टेज डिवीजन रूल. सप्लाई वोल्टेज का वैल्यू नहीं पता है, RM का वैल्यू नहीं पता है, लेकिन when RM is connected to 20k then the circuit becomes like this. VM is 440. यहां से मैंने वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई कर दिया, एक इक्वेशन आ गया. सिमिलरली सेकंड थिंग क्या है बेटा, जल्दी बताइए. सेकंड थिंग, दिस इज 80k. नाउ दिस टाइम इट इज कनेक्टेड टू 80k. तो सेकंड केस 2 क्या है? केस 2, दिस इज सप्लाई, दिस इज 80k, RM हमको पता नहीं है RM, and the voltage across the meter. Now this time how much you are going to get VM? He has given in the question, it reads 352 volts. Reads 352 volts. Reads how much? 352 volts. तो सेम एक्सप्रेशन आप निकाल सकते हैं
Vm is equal to Rm by Rm plus 80 किलो ohms इंटू Vs। इसका वैल्यू दिया है 352 वोल्ट्स। तो अगेन आपको एक एक्सप्रेशन आ गया वी आर एम इंटू वी एस आर एम प्लस 80 के। दैट मीन्स यहां से वी एस इंटू आर एम इज इक्वल टू आर एम प्लस 80 किलो ओम्स टू 350। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करें तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन आएगा। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मिला आपको, तो इक्वेशन 1 वी एस आर एम, इक्वेशन 2 वी एस आर एम। नेटवर्क थ्री का क्वेश्चन 352। सिंप्लीफाई करो बेटा, आरएम कितना आ रहा है, डू इट एंड टेल मी यार, आरएम कितना आ रहा है। टू इक्वेशन टू अननोन, फर्स्ट आरएम निकालो। टू इक्वेशन एक अननोन बेटा, वीएस सेम है, फिक्स्ड वोल्टेज रहता है ना, मीटर का रेसिस्टेंस फिक्स्ड है, अप्लाइड वोल्टेज फिक्स्ड है, तो कैंसिल हो जाएगा। कितना आ रहा है, आरएम कितना आ रहा है, जल्दी बताओ बेटा, आरएम कितना आ रहा है। आप आरएम निकाल सकते हैं ना फटाफट। आरएम कितना आ रहा है, आरएम सॉल्व कर सकते हैं। हाँ यस अंजलि, आरएम कितना आ रहा है, वेरी गुड, 220 किलो ओम्स। एक बार आरएम आ गया, यानी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, खत्म, वीएस मिलेगा आपको। वीएस इज इक्वल टू 220 प्लस 20 किलो ओम्स 440 डिवाइडेड बाय 220 किलो ओम्स। ओम्स किलो ओम्स कैंसल, ये 2 जा होगा, 240 प्लस 2, 240 इंटू 2 कितना आ रहा है, 4 नॉट। वीएस कितना आ रहा है, वीएस इज इक्वल 480 ना, वीएस इज 480 वोल्ट्स आ रहा है। आई एम राइट और नॉट, जल्दी बताइए बेटा। यस परफेक्ट। चलो नाउ थर्ड केस कर सकते हैं आप, व्हाट इज द थर्ड केस। थर्ड केस इज दिस इज 480, नाउ द लास्ट रेसिस्टर इज कनेक्टेड, दिस द मीटर रेसिस्टेंस आपको आ चुका है। मीटर रेसिस्टेंस कितना आ गया आपको, मीटर रेसिस्टेंस भी आ चुका है 220 किलो ओम्स, दैट्स इट, दिस द मीटर रेसिस्टेंस इज फिक्स्ड। क्वेश्चन पूछ रहा है वीएम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
ऐसा रेंज एक्सटेंशन लेंथी दिख रहा है लेकिन आप कर सकते हैं फटाफट। नेटवर्क थ्योरी का क्वेश्चन है, एक बार 80 किलो ओम्स यूज किया, एक बार हमने 20 किलो ओम्स यूज किया, क्वेश्चन में पूछ रहा है अभी 40 किलो ओम्स का, तो यहाँ 40 किलो ओम्स लगाओ, बस हो गया। क्वेश्चन वीएम क्या होगा, 220 किलो ओम्स डिवाइडेड बाय 220 प्लस 40 इंटू 480 होगा 220 डिवाइड बाय 260 इंटू 480 पूरा मिला के 406.15 आ रहा है, am I right? 406. कितना आ रहा है? 406.15 इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गेट खड़गपुर का क्वेश्चन है ना, खड़गपुर आई थिंक सो, दिल्ली का क्वेश्चन 406, राइट आंसर ही 406। नेटवर्क्स का कॉन्सेप्ट यूज करके आ गया, मजा आ गया। चलो जितने लोग सेशन देख रहे हैं, सेशन अच्छा लग रहा है आपको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर। या क्वेश्चन नंबर 17 फटाफट कर दीजिए, एमसीक्यू। Question: A periodic voltage waveform observed on oscilloscope across a load is shown. A PMMC. PMMC measures the average value. तो उसका एवरेज वैल्यू निकालो। फटाफट 2 मेथड से कन्वर्ट कर सकते हैं सर, बस इसी ही क्वेश्चन से आ जाए एग्जाम में। ओके ओके, ऐसा मैं देख बेटा, मैं पीवाईक्यू बोल रहा हूँ आपको, पीवाईक्यू एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो कुछ पीवाईक्यू आ गया मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डिफरेंट वर्सेटाइल प्रॉब्लम्स मैं चूज किया हूँ। डिफरेंट वर्सेटाइल प्रॉब्लम्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलो ये फटाफट एवरेज वैल्यू निकालो, व्हाट इज द वी एवरेज। तो 2 मेथड से निकाल सकते हैं, 0 to 10 एक वेव फॉर्म है, तो t greater than 0 less than 10 मिली सेकेंड्स एक वेव फॉर्म आएगा। नेक्स्ट 10 to 12 और एक एक्सप्रेशन आएगा, सिमेट्रिकल वेव। नेक्स्ट 12 to 20 और एक आएगा, दिस इज व्हाट द एक्सप्रेशन, दिस इज द v of t एक्सप्रेशन, v of t। जल्दी बताइए बेटा, v of t क्या होगा? 0 to 10, 5 minus y1, y is equal to v minus y1 0, y2 minus y1 10 minus 0, x2 minus x1 10, x is equal to time minus x1। कितना आ रहा है? t आ रहा है, तो v is equal to t, फर्स्ट वन v1। फटाफट v1 of t is equal to t। नेक्स्ट v2 of t क्या है? v2 of t का एक्सप्रेशन दिस इज minus 5। v3 of t क्या है? v of t plus 5। ओके, मजा आ गया। सो एवरेज वैल्यू निकालो। So what is the V average? That is 1 by t integration of 0 to times. So what expressions are available here? Integration of 0 to 10 t into dt plus integration of 10 to 12, that is minus 5 into, yes or not, minus 5 into dt plus integration of 12 to 20 plus 5 into, got it? वेरी गुड प्रतीक सिंह। और एवरेज वैल्यू भी निकाल सकते हैं डायरेक्टली,
टोटल एवरेज वैल्यू भी निकाल सकते हैं आप। कितना आ रहा है आपको 1/20 टी स्क्वायर बाई 2, तो दिस इज 100/2, दिस इज -5 टी होगा +5 8 होगा 40 - 10 30 4 है। और एल्स डायरेक्टली आप फॉर्मूला एरिया अंडर द कर्व बाय टोटल टाइम में निकाल सकते हैं। एरिया अंडर द कर्व क्या है हाफ BH, तो एरिया अंडर द कर्व हाफ B 10 H 10 प्लस इस एरिया कितना है 2 is -5, so -5 into 2 and this is area 5 into 8। समझ में आपको टोटल टाइम ऐसा भी कर सकते, एरिया अंडर द कर्व बाय टोटल टाइम, ये बेसिक फॉर्मूला है। ओके, एरिया अंडर द कर्व इज एरिया अंडर द कर्व बाय टाइम। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन आ चुका है यार, आपको नेटवर्क थ्योरी में भी पढ़ा है। आपको नेटवर्क थ्योरी में आरएमएस वैल्यू निकालना, एवरेज वैल्यू निकालना, सॉटूथ वेव फॉर्म का, ट्रायंगुलर वेव फॉर्म का, सिमेट्रिकल का, असिमेट्रिकल का पूरा पढ़ चुका है ना। हाउ द थिंग इज that is connected to PMMC. PMMC measures average, moving iron measures RMS, that's it. Your chalo. Let's move on bridges. Try to answer this question फटाफट। When the Wheatstone bridge shown in the figure is used to find the value of resistor Rx, फटाफट कर सकते हैं ब्रिज में, फटाफट कर सकते हैं। ब्रिज इज वेरी इंटरेस्टिंग है, सिग्नल एंड नेटवर्क कॉन्सेप्ट। ओके, फटाफट कंप्लीट कर। So he has given what is the range of Rx, आपको पता है ना R1 Rx, ब्रिज का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, R1 Rx is equal to R2 R3, so Rx equal to R2 R3 by R1। वॉइस आ रहा है, आवाज क्लियर है मेरा? वॉइस कंफर्मेशन कर दीजिए, आवाज क्लियर? हाँ ओके चलो। R2 R3 by R1, R2 कितना दिया है बेटा, फटाफट कर दीजिए। R1 is equal to 50, R2 is equal to 65, R3 is equal to 100, R3 is known with 100, R3 is known with plus or minus 5% tolerance, okay, plus or minus 5%. What is the range of Rx? R1 T, R3 is 100 plus or minus 5%. So what is the value? Please calculate. You take plus 5 and minus 5 and फटाफट कर सकते हैं।
Yes. You take plus 5 minus 5. 100 plus or minus 5%. 100 plus or minus 5% of 100. That means either 95 or 105. Okay. If you take 95 by 50 or 55 into simple calculation. देखो इतना simple calculation पर questions आ रहे हैं आपको. 65 into 95 divided by 50. It is coming 123.5, and this one 65 into 105 divided by 50 is coming 123.5 to 136.5. Option A is the right answer. Bridges पर बहुत simple questions आएगा, miss मत करना. Yes, miss मत करना. Okay, चलो. Answer for this question फटाफट. Question number 20. IIT Kharagpur 2014 का क्वेश्चन है. क्वेश्चन सिंपल है. In the bridge circuit shown, the capacitors are loss free at balance. The value of capacitance C1. फटाफट कर सकते हैं. Came Wheatstone bridge के लिए कंडीशन है R1 R4 is equal to R2 R3. AC bridges के लिए कंडीशन क्या है? Z1 Z4 is equal to Z2 Z3. Okay, so what is Z1? That is 35 kilo ohms. 35 kilo ohms. Z4 is 1 by J omega C4. Let us take this as Z1. Let us take this as Z2. Let us take this as Z3. Let us take this as Z4. Okay. Z2 is 1 by J omega C1 and Z3 is 105 kilo ohm. So J omega gets cancelled. हमको C1 चाहिए. So C1 is equal to kilo cancel. 105 by 35. सही है ना? कितना आ रहा है? 105 डिवाइड बाई 35. 0.3 ना? आंसर कितना है? 0.3 माइक्रो. चलो try to answer this question. MCQ है, फटाफट. गुड क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन. A strain gauge forms. Strain gauge means a variable resistor, my dear. Actually instrumentation बच्चों के लिए पता है. Strain gauge बोलो तो एक सेंसर, एक डिवाइस. A strain gauge forms one arm of the bridge shown in the figure below and has a nominal resistance without any load as 300 ohms. So initially this particular resistor is how much? 300 ohms. So this is 300 ohms. Other bridge resistances R1, R2, R3 are 300 ohms. So this is 300, also 300, also ohms. The maximum permissible current through the strain gauge is 20 milliamperes. So the maximum permissible is Imax, that is 20 milliamperes. During certain measurement, when the bridge is excited by maximum permissible voltage and the strain gauge resistance is increased by 1% over the nominal value, the output voltage V0 in millivolts is dash. First of all, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमको Vs चाहिए, लेकिन इसमें Vs नहीं दिया है. दैट इज अ ट्विस्ट. सो ये सर्किट को मैं ऐसा कनेक्ट करता हूं. तो दिस इज अवर Vs. इसमें Vs का क्वेश्चन में Vs इज नॉट गिवन, सप्लाई वोल्टेज इज नॉट गिवन, एंड दिस रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड लाइक दिस Rs, R1, R2, R3. I will take
this is RS, R1, like this. It's RS, R1, R2, R3, and maximum permissible current will go when the bridge circuit is in balance condition. Why? Because if this resistance increases, then what happens? If this resistance increases, definitely maximum current cannot come. Yes, the maximum current given in the question as how much, my dear? 20 milliamp. So आप ये काम कर सकते हैं. So this is a galvanometer. Maximum current is going means there is no current passing through the meter. That means bridge is balanced in the initial. Okay. So now you can calculate the supply voltage. Can anybody tell me what is the supply voltage with this information? जल्दी बताइए. With this concept आपने supply voltage को निकाल सकते हैं. I'm just sitting for 1 minute. Eyes में next I'm getting pain. IMAX दिया है क्वेश्चन में आपको. You got IMAX. What is IMAX? IMAX is given 20 milliamperes, my dear. So with this information you can calculate the VS. Very good, my dear, very good. नेटवर्क थ्योरी का कॉन्सेप्ट यूज करके आप बोल सकते हैं ना. Simple, my dear. All the resistors are equal. This is 20 milliamperes means this also will be 20 milliamperes. If this is 20 milliamperes means this is 40 milliamperes. So what is the equivalent resistance, my dear? This is Vs. So this is 40 milliamperes. And now this is split into two parts. This is 20 milliamperes. This is 20 milliamperes. And this is 300 ohms. This is 300 ohms. This is 300 ohms. 300 ohms. Got it? So now what is the equivalent resistance of the circuit? अरे यार इतना एक्सप्लेनेशन, इतना टाइम ले रहे हैं आप. नेटवर्क थ्योरी क्या पढ़ रहे हैं आप? नेटवर्क थ्योरी का प्रॉब्लम्स क्या कर रहे हैं आप? इतना सिंपल क्या आंसर है. मैक्सिमम परमिसिबल करंट विल गो व्हेन द ब्रिज इज इन बैलेंस कंडीशन. क्योंकि अगर ये पर्टिकुलर रेसिस्टेंस इंक्रीज्ड, when this resistance increase, bridge becomes unbalanced. When the bridge becomes unbalanced, you cannot get the maximum current, my dear. So when all the resistors are equal, a Wheatstone bridge having all the resistors are R, then equivalent resistance becomes R. So ये circuit का equivalent resistance क्या होगा? तो ये circuit का equivalent, this is the Vs. So this will be 40, and the R equivalent is equal to R. What is the R equivalent of the circuit? 300, 300 series 600, 300, 300, 600, 600, 600 parallel 300. यार नेटवर्क थ्योरी का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, अगर चार रेसिस्टर्स आर इक्वल, व्हीटस्टोन ब्रिज में बैलेंस्ड कंडीशन में है, आर इक्विवेलेंट क्या होगा? आर होगा 300 ओम्स होगा. खत्म. Vs इज इक्वल टू 40 इंटू 40 मिली एम्पियर्स इंटू 300 लगाओ, आपको कितना आएगा? 12 वोल्ट. मजा आ गया बेटा, मजा आ गया. विकास जी, अंजलि जी, जितने लोग सेशन को देख रहे हैं, ये तगड़ा कॉन्सेप्ट है नहीं? जितने लोग सेशन को देख रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर का कॉन्सेप्ट है नहीं? ये पर्टिकुलर लॉजिक के लिए आप लाइक मार सकते, ये पर्टिकुलर लॉजिक के लिए आप एक गुड थैंक्स बोल सकते. ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ना. आपका नेटवर्क थ्योरी का कॉन्सेप्ट इधर यूज किया, जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने स्ट्रेन गेज नाम लगा दिया. तो क्या होता है, एग्जाम के समय में स्ट्रेन गेज बोलो तो आप कंफ्यूज होते, लेकिन ये क्वेश्चन एप्लीकेशन है. व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन है बेटा. व्हीटस्टोन ब्रिज इन रियल टाइम इज यूज्ड इन ग्रोसरी शॉप, in kirana shop. When you go and ask the merchant
250 ग्राम्स ऑफ शुगर चाहिए, 1 kg wheat powder चाहिए, 1 kg आटा चाहिए, then the merchant is going to keep the load on a flat surface my dear. ये flat surface के नीचे एक wheatstone bit circuit है my dear. When you are keeping the load on that particular surface क्या होगा, वो surface gets strained my dear. वो strain की वजह से नीचे resistance change होगा, नीचे resistance compress होगा, नीचे resistance R plus del R होगा, then bridge becomes unbalanced. When bridge becomes unbalanced आपको V bridge आएगा, that V bridge is connected to 741 op amp, amplify output आएगा, amplified output is given to ADC 0808 chip, digital output आएगा, that digital output is connected to एक LCD 7 segment display, उसके ऊपर आपको दिखाएगा 250 grams 240 grams, तो 10 ग्राम्स शक्कर डालो, 10 ग्राम्स निकालो, उसका वैल्यू चेंज हो जाता है। किराना शॉप में देख सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन में कॉन्सेप्ट यही है बेटा। ब्रिजेस आर यूज्ड, एनालॉग सर्किट्स आर यूज्ड इन आवर डे टू डे लाइफ। तो 12 वोल्ट्स आ चुका है, चलो एक सर्किट को बदल जाएगा। सर्किट क्या होगा अभी? 12 वोल्ट्स, दिस इज 300, दिस इज 300, 300। हाँ, अभी क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या दिया है देखो। A strain gauge forms one arm of the bridge shown in the figure below and has a nominal resistance without any during certain measurement, when the bridge is excited by maximum permissible voltage and the strain gauge resistance is increased by 1% over the nominal value, resistance increased by 1%, इस रेसिस्टेंस कितना अभी? RS 300 plus or minus increased, not minus, increased by 1%. That means 300 1 by 100 into 300, 303 होगा। Now the circuit is becoming as what now my dear? Now it is 300 नहीं है, ये 303 है। Then question asked what is a V bridge? V bridge आप निकाल सकते हैं, वोल्टेज डिवीजन रूल यूज कर सकते हैं आप। These two resistors are in series, so 303 divided by 303 plus 300, मजा आ रहा है आपको? सप्लाई वोल्टेज 12 वोल्ट्स माइनस 300 divided by 300 plus 300 ना आएगा? कैलकुलेट करके बताओ ना बेटा। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। मिली वोल्ट्स में बताइए, 0.029 वोल्ट्स आ रहा है नहीं? 29.85 exactly, 29.85 मिली वोल्ट्स में आंसर। सही आंसर क्या है? 29. वो वोल्ट्स में अंजलि, दैट इज वोल्ट्स। ऐसा लगा क्वेश्चन बेटा? हाउ यू फील दिस क्वेश्चन माय डियर? आरंभ से जितने लोग सेशन को देख रहे हैं, आपको सेशन कैसा लग रहा है? आपको बेनिफिट हो रहा है ना इस सेशन? Are you experiencing the feel of measurements? Are you experiencing the application of network theory? Are you experiencing the application of voltage division rule, current division rule, Kirchhoff law? मस्त है, नाइस नाइस। मिलीवोल्ट्स, प्रतीक शर्मा मिलीवोल्ट्स में लेना है। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। वेरी सिंपल क्वेश्चन, जल्दी। ऐसा क्वेश्चन है तो बहुत अच्छा होगा ना सर। इतना प्रॉब्लम सॉल्व करके गया सर, गेट में इतना प्रॉब्लम सॉल्व करके गया सर, लेकिन प्रॉब्लम कैसा आ गया गेट में देखो। 2012 में क्वेश्चन आ गया जल्दी। द ब्रिड्ज मेथड कॉमनली यूज्ड फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस
Sharing bridge is for capacitance, my dear. DSRT bridge also capacitance measurement. Wien's bridge is for frequency. The remaining is Campbell bridge. Campbell bridge. So that is for mutual inductance. Option A is the right answer. अरे यार डी बोल रहे, कौन रे डी बोलने वाला, कौन रे डी बोलने वाला? म्यूचुअल इंडक्टेंस वीन्स ब्रिड्ज में डब्ल्यू है, डब्ल्यू बोलो तो 2 पाई एफ बोलो तो फ्रीक्वेंसी रे. Wien bridge is for frequency measurement, my dear. विकास जी. चल, let's go for the next question. पावर एंड एनर्जी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे फटाफट. क्वेश्चन नंबर 20 ये फटाफट क्वेश्चन एमसीक्यू IIT Guwahati. All the power measurement questions will come from the fundamental formulas. एक भी बार वॉच नहीं दिया कंप्लीट, मजा आ रहा है सर. सुपर 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 नाइस. कमल प्रताप सिंह जी, कमल का सुपर. एंजॉयिंग योर कमेंट्स आर एक्सेलेंट. कैसे करना है आंसर के लिए? मैं वेट कर रहा हूं बेटा. ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं एक अच्छा फॉर्मूला देता हूं. फटाफट फॉर्मूला निकल लो. tan phi is equal to simple √3 W1 minus W2 by W1 plus ये फॉर्मूला. ओके माय डियर, सिंपल. ओके, ऐसा रिमेंबर करना. 2 wattmeter method is used for the measurement of power in a balanced 3-phase load supplied from balanced 3-phase. One of the wattmeters positive लेने के लिए try करो. So one of the wattmeters W2 is equal to half of the other. कितना आएगा आंसर जल्दी बताइए. W1/2, 2/3 W1, 2 खत्म, W1 खत्म, √3/√3 1/√3. तो phi is equal to 30 degrees. करेक्ट है ना? tan phi is equal to 1/√3. phi is equal to 30. cos phi, cos 30, cos 30 means cos 60 1/2, √3/2. √3/2 means 0.86 here. आंसर सिंपल की बात है, मजा आ गया. 2 wattmeter bridge concept. What is bridge? I didn't understand. बेटा विकास क्या बोल रहे हैं आपने? 2 wattmeter bridge. हाँ, forget 2 wattmeter formula during mock. Okay. My dear students,
2 वाटमीटर के लिए ये फॉर्मूला रिमेंबर करने की कोशिश कीजिए। 2 वाटमीटर के लिए ये फॉर्मूला 1 W1 PL IL cos 30 minus 5, क्वेश्चन 1 डालो। W2 PL IL cos 30 plus 5, क्वेश्चन 2 डालो। ओके, W1 माइनस W2 क्या आएगा, जल्दी बताइए सर। ये एक बार गेट 2023 में 2 वाटमीटर से आएगा, पक्का आएगा बेटा, पक्का आएगा। अगर उस दिन गेट में आने के बाद मुझे फोन करके बोलना है, सब कुछ मुझे पता है, तो मैं 23 में क्या आएगा, what questions are going to, then why I will discuss all these questions। चलो जल्दी बताइए बेटा, कितना होगा VL IL cos 30 minus 5, cos 30 minus 5 minus cos of 30 plus 5। फटाफट जल्दी बताइए कितना आ रहा है आपको। VL IL cos A cos B plus sin A sin B minus cos A cos B cos of A plus B cos A cos B minus sin A sin B minus minus प्लस हो गया ना, sin 30 sin 5, खत्म खत्म। तो PL IL 2 sin 30, दैट मीन्स sin 30 1/2 2 खत्म ना। ये क्या है बेटा, इधर रिएक्टिव पावर ना। If you take star connection, VL is equal to √3 VPH, मजा आ गया। तो दिस इज सिमिलरली W1 plus W2 क्या आएगा। somebody asked me the formulas, के बारे में मैं बोल रहा हूँ। somebody asked me the formula related to that, I am telling my dear। W1 plus W2 कथा का cos 30 minus 5 plus cos 30 plus 5 क्या था, cos 30 cos 5 sin 30 sin 5 plus 2 cos 30 sin खत्म होगा, 2 cos 30 cos 5 आएगा, cos 30 बोलो √3/2 2 खत्म होगा, √3 VL IL cos 5 होगा, खत्म हो गया ना। हाँ, अभी W1 माइनस W2 बाई W1 प्लस W2 करो। PL IL sin 5 डिवाइड बाई √3 PL IL cos 5, क्या होगा, VL कैंसल, sin 5 cos 5 tan 5 इज इक्वल टू √3 इंटू W1, गया ना, मजा आ गया विकास जी। tan 5 का फॉर्मूला आ चुका है आपको, दैट्स इट। ये फॉर्मूला याद रखने की कोशिश करो। अगर ये फॉर्मूला रन टाइम में आपको याद नहीं आया, सिंपल पावर का फॉर्मूला क्या है बेटा, पावर का फॉर्मूला, लेकिन फेजर डायग्राम से हमको 30 minus 5 30 प्लस, आपको अगर ये फॉर्मूलास कैसे आ गया, इफ यू वांट नो द रेफरेंस प्लीज गो टू माय यूट्यूब सेशन। मैंने वन शॉट सीरीज में बताया, यूट्यूब लाइव सेशन में भी बताया, पूरा डेरिवेशन किया मैंने, एक अच्छा रंगोली का डायग्राम भी दिखाया आपको। ओके, ये क्वेश्चन के ये पर्टिकुलर फॉर्मूलास के ऊपर इतना सारा क्वेश्चंस आ गया, इतना क्वेश्चंस आ गया, एवरी ईयर इलेक्ट्रिकल बच्चों के लिए इतना सारा क्वेश्चंस आ गया, सिंपल कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन देखो बेटा, नाउ यूज योर कॉन्सेप्ट। ये थोड़ा डायग्राम थोड़ा आपको प्रॉब्लम दिख रहा है, W1 W2 W3 बेटा, 3 वाट मीटर्स यूज किया पावर मेजरमेंट करने के लिए, W1 W2 W3। पहले ऑल दीज आर कनेक्टेड टू न्यूट्रल, दिस आर न्यूट्रल स्विच माय डियर। आपको ध्यान से देखो डायग्राम, अच्छा दिख रहा है आपको, दिस आर न्यूट्रल। व्हेन इट इज कनेक्टेड टू न्यूट्रल क्या होगा, इसका रीडिंग W1, इसका रीडिंग W2, इसका रीडिंग W3, W1 प्लस W2 प्लस W3 का आंसर आ गया। लेकिन क्या हो रहा है, अभी न्यूट्रल से शिफ्ट करके Y को कनेक्ट कर रहे हैं। व्हेन यू इज कनेक्टिंग टू Y,
what is happening? One of the wattmeter reading becomes 0. तो क्वेश्चन देखो, आराम से देखो भाई, इतना सारा एक्सप्लेनेशन दिया आपको, 2017 आईडी रूरकी में आ गया, आंसर बताओ। सर वन शॉट से कंप्लीट हो जाएगा सर, कंप्लीट मेजरमेंट्स फॉर गेट 2020 हो जाएगा बेटा, हो जाएगा, क्योंकि ये वन शॉट सीरीज में मैंने पूरा एक्सप्लेन दिया, पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बता दिया, वो पढ़ के जाओ। अभी तो 1 महीने के अंदर आप कुछ नहीं कर सकते वन शॉट सीरीज का। आई एम एक्सपेक्टिंग द आंसर बेटा, ये क्वेश्चन ध्यान से देखो। द लोड शोन इन द फिगर इज सप्लाइड बाय 400 वोल्ट्स लाइन टू लाइन 3-phase source. The load is balanced and inductive, drawing 3464 VA. Can anybody tell me what is this 3464 VA? What is this 3464 VA? Can anybody tell me what power this is? 3464 VA. 3464 VA बोलो तो क्या पावर है? आप इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट से, आपको पता होना है, इतना लेट मत करना। 3464 वोल्ट एम्पियर, वोल्ट एम्पियर, AR वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव वाट, वोल्ट एम्पियर बोल तो क्या पावर है? इज इट रियल पावर, इज इट रिएक्टिव पावर, और इज इट अपरेंट पावर? पूरा फेस बदल गया है रेडिएशन की वजह से, और 1 घंटे पड़े तो मैं क्या होगा ना, मेरा फेस ऑलमोस्ट लाइक बिफोर एंड आफ्टर होगा। हाँ, मुझे आंसर तो नहीं मिल रहा आपसे। व्हाट इज दिस पावर गिवन बेटा? फेयर एंड लवली यूज करना है, जल्दी बताओ। अरे कमल जी क्या हो गया? आई एम आस्किंग व्हाट पावर दिस इज। 3464 वोल्ट एम्पियर इज व्हाट पावर? अरे इतना टाइम ले रहे हैं आपने, इतना टाइम ले रहे हैं। अपरेंट पावर, अपरेंट पावर का रिप्रेजेंटेशन क्या है? यस, अपरेंट पावर दिया है क्वेश्चन में, एंड व्हाट इज गिवन? सी the 3 watt meters W1, W2, W3 577.35 watt each. So what is the real power? Very good, that is a true power. What is that? नोटेशन, नोटेशन बताइए इलेक्ट्रिकल बच्चों, आपको पता होना है ये पूरा। रियल पावर और एवरेज पावर। प्रतीक शर्मा आंसर कॉस P my dear, so that is W1 plus W2 plus W3 कितना है? That is each 577.35. तो डायरेक्टली 3 into 577.35 करे तो आपको कितना आएगा? 577.35 into 3 करे तो आपको कितना आएगा? 1732 आ रहा है। ओके मिला? तो आपको पता है पावर फैक्टर, पावर फैक्टर इज इक्वल टू cos phi, cos phi इज इक्वल टू व्हाट माय डियर? cos phi इज इक्वल टू P by S। डायरेक्टली आप यहां से निकाल सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं, सिंपल है। और इतना सिंपल टेक्निक बोल रहा हूं मैंने। 0.5 आ रहा है, दैट मीन्स 5 इज इक्वल टू 60 आ गया। एंड 5 इज इक्वल टू 60, वन ऑफ द वाट मीटरिंग क्या होगा? वन ऑफ द वाट मीटरिंग W1 VL IL cos ऑफ 30 minus 5 एक, एंड अदर वन VL IL cos
30 प्लस 5, तो डेफिनेटली क्या होगा, वन ऑफ द वाट मीटर का रीडिंग 0 हो जाएगा, कोई ना कोई रीडिंग 0 हो जाएगा। अगर आप डायग्राम देखें तो क्या हो रहा है इधर देखो, अगर आप डायग्राम देखो तो क्या हो रहा है, whenever this particular coil or this particular switch is shifted from neutral to Y, the wattmeter to potential coil is going to grounded or not? The wattmeter 2 reading is going to become 0 or not? Whenever this particular switch is connected from neutral to Y, that means one of the wattmeter reading is becoming grounded. That means W2 is going to become 0, my dear. So 30 plus 5, 0. When 1 is 0, the remaining together W1 plus W2 plus W3 में W1 plus W2 plus W3 में W2 0 हो गया, and W3 क्या होगा, W1 क्या होगा, देखो तो कैसे करना है कैलकुलेशन को, so sorry, W2 is going to become 0. 1 second. W2 is diagrammatically 0. W2 diagrammatically 0. Okay, W2 0 हो गया. See from the picture, if you see, W2 is automatically become, from the picture W2 has become 0 because it is grounded. From the diagram, W2 has become 0. Now what we have, W1 and W3. So W1 will become as VL IL cos of 30 plus 5 you take, and this one VL IL cos of 30 minus 5 you take, becomes 0, cos 30 VL IL cos 30 minus 60 cos 60 cos minus 30 cos 30 root 3 by 2. So root 3 by 2. See here we can get this 3464, we can get it from using the what, S is equal to root 3 VL IL na? What is S? S is equal to what, root 3 into VL, करो बेटा कितना आएगा, W3 344 by 2 3 आ गया. Got it or not? Yes. Superb. W3 1730. So question का आंसर क्या होगा? One of the what? See from the picture itself, you can understand, my dear. Connected W2 becomes 0 first of all. Now from the formula, W1 is also become 0. 1 wattmeter reading. Why? Because W1 plus W2 plus W3 is becoming 1732. मजा आ गया. Reactive power is given 3464 VA. Reactive power, sorry, what is called? Apparent power is given 3464 VA. That is nothing but root 3 VLIL. All of you got it, my dear? Everybody is clear about these powers. Shall we go for the energy meter? One of the important topic for the electrical student is energy meter. Energy meter पर भी questions आएगा. Okay. Question number, sorry sir, before going for that, question number 26 आंसर कर दीजिए. What is given? The V of t is given as 100 sin omega t. So this is one fundamental. But I of t, this is one fundamental. Only fundamental is omega t. Fundamental parameter is omega t. I of t is given as 10 sin first fundamental, the second fundamental, and the third fundamental. ओके. बट हमको पावर चाहिए. पावर के लिए क्या चाहिए आपको? पावर, एवरेज पावर चाहिए. एवरेज पावर के लिए आप क्या निकालेगा?
what you will do, average power is equal to VRMS, IRMS into cos phi. VRMS is equal to what? VM by root 2. IRMS is equal to IM by root 2 cos phi. Am I right or not? What is the answer? What we have to take now in current, even though current is having so many things, but we cannot take only, the first fundamental. Whatever the first fundamental is matching for the voltage and current, but there is no second fundamental for the voltage, there is no third fundamental for the voltage. Are you understand? Okay. So what is the VM now? VM is equal to 100 by, you understand, average power is equal to what? VRMS into IRMS into cos phi. VRMS is equal to VM by root 2. 100 by root 2, 10 by root 2, and cos, which angle we have to take? The fundamental parameters angle, cos 6. Now answer है root 2. आंसर कितना आ रहा है? जितने लोग सेशन को देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना है. अंजलि, प्रतीक शर्मा, रसु गोस्ता, Pratik Sharma, everybody, because you should understand what is the average power, what is the fundamental. These are very, very important questions for electrical students. आंसर कितना आ रहा है बेटा? 250 आ रहा है. सही है? $27th question. This question is related to energy meter. Energy meter पर आपको fundamental questions आएगा. 2016 IISc बैंगलोर का question है. An energy meter having a meter constant. So आपको पता है energy meter में number of revolutions are proportional to energy consumed. Number of revolutions के लिए K into E होगा. Question पूछ रहा है. What is the data given? This is energy meter constant. Energy meter having meter constant 1200 revolutions per kilowatt hour. So K is equal to 1200 revolutions per kilowatt hour. Makes 20 revolutions in 30 seconds. N is equal to how much? 20 revolutions. Time is equal to 30 seconds. For a constant load, what is that load is asking? First of all, what is energy? Power is equal to energy per time. Energy is equal to power into time. Power means VI cos phi. Cos phi is not given. You can take it as unity power factor. So this is VI. Unity power factor, if you take, this is the T, the energy. So that is a formula. So N is equal to 20 revolutions. Substitute karo. Next, this is 20 revolution, substitute karo. K is equal to 1200 revolutions per kilowatt hour, substitute karo. Energy is equal to power into time, I agree. But this one, what you are going to get? Power into time, this power into time, what you are going to get? In watt second. This is watt second. If you divide by 1000, you will get kilowatt. If you divide this by 3600, get hour. Got it? Everybody clear or not? Every student of electrical must understand this. Power into time, power is in watt, T is in seconds. उसमें convert करना है. 1 kilowatt is equal to 1000 watts. So 1 watt is equal to 1 by 1000. Clear? All clear? Time in seconds, उसको भी convert कर रहा हूँ मैंने. Sir, by default we take unity. If it is not given, yeah, if it is not given in the question, we can take it as the load is resistive load. The load is resistive load. For the resistive load, the power factor is 1. Substitute karo. So kilowatt hour gets cancelled. Revolutions gets cancelled. So 20 by 1200 into 1000 into
3600 divided by time. What's the time? Time is 30 seconds. That is going to be in kilowatts. So 1, 2, 3, 1, 2, 3, 12, 3 ja khatam. You are getting 2000 watts. That means the answer is 2 kilowatts. बेटा अभी कवर नहीं कर सकता हूँ शुभ शंकर, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है ऑलरेडी। मैंने CRO एंड क्यूमीटर के क्वेश्चंस के लिए आप यूट्यूब पर मेरा वन शॉट सीरीज में क्वेश्चंस हैं, प्लीज फॉलो वन शॉट सीरीज। ऑलरेडी 10 बज रहे, ओके, so you please go through the one shot series. Already in one shot series we have covered one shot series and live YouTube live session भी मैं लिया हूँ इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स के लिए, उसके ऊपर आप देख सकते हैं। चलो, try to solve this question. This question is due to error due to connection, error due to pressure coil connection. The coils of a wattmeter having a resistance 0.01 ohms and 1000 ohms. What is that? The current coil, my dear. If you see the wattmeter diagram, this is the current coil, the potential coil. The resistance of the current coil is given as how much? 0.01 ohms. The potential coil resistance is given RPC, that is 1000 ohms. The wattmeter is connected as in the figure. What is this connection? Can anybody tell me? The moving coil is connected to the load side. This is the mains. This is what connection? Can anybody tell me? I have explained you already in the previous YouTube sessions. मैंने explain किया हूँ. Can anybody tell me what is this connection? यार आंसर मैं देख रहा हूँ, आंसर के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे, ये क्या कनेक्शन है? LC connection, MC connection, what connection this is? The moving coil is connected to main side or load side? The moving coil is connected to main side or load side? अगर मूविंग कॉइल मेन साइड कनेक्ट करे तो उसको हम बोलते हैं MC कनेक्शन बोलते हैं, और मूविंग कॉइल लोड साइड कनेक्ट हो गया उसको हम बोलते हैं LC कनेक्शन. So this is the LC connection. LC connection means the potential coil is connected at the load side. The potential coil is connected at the load side. When potential coil is connected at the load side, the true power is this actually, but the measured power क्या है? Measured power will be along with the true value, along with this true power, we are also going to get the power consumed by the pressure coil. Power consumed by the pressure coil. मजा आ गया? So this is actually IL cos phi. But ये क्या है? प्रेशर कॉइल का रेसिस्टेंस एंड प्रेशर कॉइल का वोल्टेज V square by R. Got it or not? मैंने एक्सप्लेन कर दिया पूरा, MC कनेक्शन, LC कनेक्शन पूरा एक्सप्लेन कर दिया प्रीवियस लेक्चर्स में. देखो आप, एनीबॉडी अंडरस्टूड और नॉट? अगर द सेम पोटेंशियल कॉइल इज कनेक्टेड टू दिस साइड, मेन साइड, then the power consumed will be this power plus this power, then the true value plus current coil I square RC आएगा. yes or no?
MC connection, potential coil is connected to the main side. LC connection, potential coil is connected at the load side. Here the error, here the true value क्या है? True value is this. But what is the measured value? In addition to true value, in addition to this, power consumed by the current coil. That is current passing through the current coil and resistance of the current coil. In LC connection, true value is VL IL cos phi, but the measured value क्या है? And to this extra potential coil, this and this. That is understood or not? मजा आ गया? ये फॉर्मूलास को याद रखना इजी है ना? ये फॉर्मूलास को याद करना इजी है आपको. Whatever may be the connection, जो कुछ भी कनेक्शन हो, either इसे LC कनेक्शन हो और MC कनेक्शन हो, ये कनेक्शंस में एरर किसकी वजह से आ रहे हैं? Is due to the coil which is connected to the load side. In MC connection, which coil is connected to the load side? Current coil. Coil is connected to the load side, current coil. That's why error is due to current coil. In LC connection, which coil is connected to the load side? Potential coil. That's why error is due to potential coil. Got it? चलो now फटाफट आंसर कर दीजिए. क्वेश्चन में क्या दिया है? 0.01 ohms, 1000 ohms दिया है. ओके. 0.8 is a power factor, draws 25 amperes, 30 volts. Everything is given. Everything is given. Everything is given. Please try to calculate. Try to calculate. So true power क्या है? Is 30. The voltage across the load 30, current is 25. पावर फैक्टर कितना है? 0.8. तो कितना आएगा ये? 30 into 25 into 0.8, 600. अभी कितना होगा मेजरमेंट वैल्यू? 600 plus PPCs, the same voltage here also, pressure coil voltage also same, 30 volts, 900 by resistance of the pressure coil. Resistance of the pressure coil कितना दिया है? 1000 ohms. 0.9, 600.9. क्वेश्चन पूछ रहा है परसेंटेज एरर. परसेंटेज एरर 600 watts, 600.9 watts. कितना आ रहा है परसेंटेज एरर? जल्दी बताइए. कितना आ रहा है आंसर? मेजरमेंट वैल्यू 600.9 माइनस 600 डिवाइड बाय 600. मुझे आ रहा है 200. 0.15. It is not about the mutual inductance, my dear. It is about the deflection, change in mutual inductance according to deflection. Either it is self-inductance or mutual inductance.
dl by d theta or dm by d theta. It is not mutual inductance. It is not about the inductance. It is the increment in inductance. Increment in inductance due to the deflection. Increment in inductance due to the deflection, that is dl by d theta or dm by theta, must be in radians. Not about inductance. It is inductance due to deflection. dl by d theta or dm by d theta must be in radians. Henry per radian. What is the answer यार? कितना आ गया आंसर? आंसर बोलो यार. Nobody is telling the answer. सब लोग सो रहे क्या? Everybody slept आ? अरे भाई खाना भी नहीं खाया यार. 3 घंटे से 3.5 घंटे हो रहे हैं ऑलरेडी. 3.5 घंटे से सेशन चल रहा है बिना फूड. आप तो सो रहे हैं आप लोग. हाँ 0.15% हो गया आंसर. कितना? The K value is not mentioned, Akash Jain. In that question, the K value is not mentioned. The K value can be in the radians also. In that spring constant ka units can be in radians na. So that is a point. Okay. Spring constant ka units are not mentioned. Spring constant ka value is not mentioned in that. Spring constant can be in the next question. Yeah, please try to solve this last question, question number 29. Akash Jain, actually ये question में डिग्री पर रेडियन और हेनरी पर रेडियन कन्वर्शन की बात नहीं है उधर. इसमें K का वैल्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है. द डिफ्लेक्शन टॉर्क इज इक्वल टू हाफ I square dl by d theta. Deflection torque is equal to I square dm by d theta. The deflection torque LHS half I square dl by d theta RHS for moving iron. Deflection torque LHS I square dm by d theta for RHS for dynamometer. The deflection torque units are Newton meter. Torque units are Newton meter. That will be Newton meter if and only if this RHS dl by d theta is in Henry per radian. That is a conversion. Deflection torque is equal to half I square dl by d theta for moving iron. Deflection torque is equal to I square dm by d theta per dynamometer. The LHS RHS units will be balanced if and only if dl by d theta and dm by d theta units are Henry per radian. That is a point actually you have to understand. That is with respect to Newton meter conversion. Last question of the day. A low power factor wattmeter of a power factor 0.2 is having 3 voltage settings, 300 volts, 150 volts, 75 volts, and 2 current settings, 5 amperes and 10 amperes. The full scale reading is 150. If the wattmeter is used with 150 volts voltage setting and 10 amperes current setting, the multiplying factor of the wattmeter. Very, very good question. Very, very good question. I am expecting the answer for this question from any one of you. I am waiting because लगभग 28 questions or 29 questions मैंने पढ़ाया. I am expecting the answer from you. Thank you, thank you. अरे आपको अंडरस्टैंड करो तो एक मंच का
Waiting for your answers. This question का answer I'm expecting from you, my dear. Nobody. अरे यार 15 लोग देख रहे हैं क्वेश्चन, 15 लोग से कुछ आंसर नहीं मिल रहा है मुझे। देखो वाट मीटर है, वाट मीटर के लिए हमको क्या चाहिए, वाट मीटर के लिए वोल्टेज रीडिंग चाहिए, करंट रीडिंग चाहिए, पावर फैक्टर रीडिंग चाहिए, बस। ओके इधर a low power factor wattmeter of power factor 0.2 having 3 voltage settings 300, 150, 75, 2 current settings 5 amperes 10 amperes, the full scale reading is 150 watts. So this is a full scale reading of the wattmeter. Just I am representing the wattmeter as a reading. Okay, so this wattmeter full scale value कितना है 150 watts. If the wattmeter is used with 150 volts and current setting as 10 amperes and the power factor is 0.2, हमको कितना आ रहा है 300 watts आ रहा है। I think nobody is giving the answer. See, this is the maximum range it can extend. That means you are extending the wattmeter reading from 150 watts to 300 watts. So what is the multiplying factor? Just like in PMMC ammeter, I by IM is the multiplying factor. In PMMC voltmeter, V by VM is the multiplying factor. In wattmeter also, the range for which it can extend and the range it is right now measuring, that is also multiplying. Very, very good concept. My wattmeter का range, my watt, just like मैंने PMMC ammeter का range extension किया, PMMC voltmeter का range extension किया, in a similar way मैंने wattmeter का range भी extend कर सकता हूँ। मेरा wattmeter का full scale value कितना है 150 है, मेरा वाटमीटर का फुल स्केल वैल्यू कितना है 150 है, लेकिन वाटमीटर में जो कुछ वोल्ट मीटर है करंट है ना, ये वोल्ट मीटर का सेटिंग्स क्या है 300 वोल्ट से 150 वोल्ट से 75 वोल्ट से। अभी मैंने 150 वोल्ट्स का वोल्ट मीटर यूज करे तो मुझे कितना पावर आ रहा है 300 वाट्स आ रहा है। दैट मींस आपने 150 वाट्स मेजरिंग करने का वाट मीटर का रेंज 300 वाट्स तक एक्सटेंशन कर रहे हैं, 150 watts to 300 watts extension कर रहे। so what is the conversion factor, multiplying factor, 300 watts by 150 watts, the right answer will be 2 my dear। मजा आ गया क्वेश्चन? how many of you understood this question? the multiplying factor is 2 my dear। लास्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, फटाफट कर लो क्वेश्चन, 30th क्वेश्चन। while measuring the power of a three phase, फटाफट कर सकते हैं, W1 is given 100 watts, W2 is given as power factor is, कर सकते हैं आराम से।
आंसर बताइए जल्दी। आंसर तो आपको कितना आ रहा है? 0.8 पॉइंट। ऑल ऑफ यू एंजॉयड द सेशंस माय डियर। 30 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किया हूं, 30 बेहतरीन क्वेश्चंस है पीवीक्यू। डिफरेंट कॉन्सेप्ट से मैं किया हूं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट मैं एक्सप्लेन किया हूं। ऑल ऑफ यू एंजॉयड। क्लियर फॉर टुडे। 30 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किया हूं, बेहतरीन सेशन है। थैंक्स फॉर योर कंटिन्यूस सपोर्ट। जितने लोग 7 o'clock से 7 बजे से अब तक है, उन लोगों के लिए मैं इस सेशन को डेडिकेट कर रहा हूं। ओके, एक सिंपल क्वेश्चन है, दीज आर ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया आपको सीआरओ एंड क्यूमीटर के बारे में। ओके, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट सीआरओ क्यूमीटर पर क्वेश्चन चाहिए, आप मेरा लाइव सेशन से वन शॉट सीरीज का सेशन है, उसके ऊपर आप ध्यान रखते हैं। ओके, so I hope all of you enjoyed my session. Love you all. Love you all. Jai Hind.